इंसानी प्रजाति बहुत प्रजाति है. तू अलग मूली है, तू कहीं और पैदा हुआ था, तू इस जनरेशन का पार्ट नहीं. तेरे को क्यों लगता है तू स्पेशल है? कंप्लीटली नंगे हम स्विमिंग कर रहे हैं रात से 3-4 बजे से अंधेरे में. इस आपकी लाइफ कैसा चल रहा है? सही है? मजा आ रहा है? क्योंकि नहीं आ रहा ना. सच बताओ. लोग नीचे बोलते हैं गर्ल्स दीज डेज. वो भाई वो लड़कियां बोलती बॉयज दीज डेज. ऑल मेन आर ट्रैश. हर पॉलिटिकल कैंपेन का अंडरलाइन टैगलाइन होता है राम राज्य आया है अपनी चिंताओं में. ओ माय गॉड ये कैसे होगा? ओ मेरे को ये चाहिए. ओ काश मेरे पास ये होता, इसके पास ये क्यों है? आपको लोग जॉर्डन पीटरसन बोलते हैं इंडिया का क्या? मेरे को Have you heard that before? Yeah. I mean, I heard that before I was famous on social, bro. Like मेरे friends कोलंबिया में मेरे को बोलते थे and it's a tremendous compliment. मतलब मैं compliment भी क्या बोलूँ? Of course, I understand that this is a joke and part of it comes from the fact that, bro, when I was roughly your age, when I was 21, 22, अब तो तू 24-25 का होगा? 22 itself. 22, right? Yeah. So when I was your age, I was going through, let's say, a kind of an awakening. I had just moved countries. I was living in America. I was living by myself and it was strange and, you know, the environment itself was kind of overwhelming. तो मैं बोलते बोलते जॉर्डन पीटरसन बन गया फिर से, right? And it was not like, see, I think Peterson says something about having a second father, right? You have a first father, you have a second father. I also think you have third, fourth, fifth fathers. But Peterson was, in a sense, my second father, right? I learned a lot about how to lead a life as a man, as a boy transitioning into a man from Peterson. And I frankly think he's a genius. I know there is a little bit of discredit that happens to him now, partly because of his political commentary, which I've always kind of thought is a little whatever. Mm-hmm. But I think he's a genius when it comes to understanding psychology. He's a genius when it comes to pointing to the fact that psychology is better understood in religion and spirituality and those domains than it is in actual science psychology. And so I copied a lot of his behaviors, right? But I have phases like the last podcast I was talking like this, which is very Osho. So it depends on who I'm listening to, you know. You sort of have an osmosis kind of a thing with people you listen to. And I'm sure I have seen videos of people trying to talk like me also on the internet. Because they listen to me a lot and then they talk like me. So it's very understandable. What is the biggest thing that you've learned from him? From Peterson? Let's see. I'll tell you what. I think what I've learned from him, and it reflects in the way I talk, is you must always attempt to chase your thoughts with words. And it's not a very simple idea. But the point is, when you're speaking to illuminate the idea to yourself. तुम अपने से बात कर रहे हो. And when you're trying to talk to yourself, you are thinking at a speed. और उसके पीछे, you are trying to chase it down with words that you speak. And in doing so, you produce the best kind of answer to a question that you can. Interesting? Very interesting. Right, I agree. अब ये होने वाला है वीडियो में अभी आगे चल करके hopefully. डरा रहा है भाई. कहाँ ले जा रहा है? नहीं ठीक है. हाँ. Tell me about US. How did US change you as an Indian male going to US? In what ways did it change you and how did it make you better or worse? Bro, why did you assume my gender? First of all. You don't know my pronouns. I haven't given. Too many ways. ठीक है? तो, see, I come from a smallish town. I won't say Faridabad is a small town, but it's a smallish town. It is right south of Delhi. So there is a Delhi sort of let's say Delhi flows into it. But in the day-to-day, it's a small community. Okay? And within that small community also, there's only so many people that are worth knowing. So effectively, I was a big fish in a small pond. Right? I remember touching down in America, or in my classroom, I had students everywhere from 18 to like 30 something. Not even that, like some students, मैं average बता रहा हूँ, like there were some 70-year-olds also. Right? Columbia University. Columbia में. And particularly in, Columbia has a school called the School of General Studies, which is open to students who want to start their undergrad late for whatever reason. You were an actor, a ballet dancer, an army veteran, whatever. You want to come to school now, come. For you, it'd be perfect. Okay? Because, you know, you are famously a dropout. So, I landed. I remember day 1 or day 2, school orientation हो रही थी. ठीक है? It's a very overwhelming experience, first of all, when you land there in America or matlab orientation ho rahi hai. And I was 21, so I was kind of already a few years older than the average freshman. I met my roommate to be at the orientation. His name was Parveer Sidhu, from California, originally from Punjab. I met him, I spoke to him, and I was like, whoa, what? Like, matlab, मेरे को मेरी औकात पता लग गई, ठीक है? In what terms? Matlab, bro, he was Prakhar, but 1.5 times in every way. He was like my older brother, right? Like he was the guy I modeled myself around for a very long time. He was the same guy. Age. No, he was older. He was a few years older. Mm-hmm. But psychologically
from a standpoint of wisdom, courage, morality, many years older. Many years older. Like maybe, like he seems like he's a 50-year-old in the way he carries himself. And I mean that as a compliment. Like great guy. ठीक है? तो मैं उससे बात करी, मेरी थोड़ी फट गई. मेरे को लगा वाओ यार, मतलब fuck, these guys have depth. तो उसी रात को हम लोग अपने अपार्टमेंट में बैठे हैं. हमारे अपार्टमेंट में कोई फर्नीचर नहीं है और हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रखा है. हम पिज़्ज़ा बॉक्स ज़मीन पे बैठ के एसी के बगल में, गर्मी और ऐसे फॉल की सी शाम है, हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बात कर रहे हैं. एंड वी आर डिस्कसिंग आइडियाज़, वी आर डिबेटिंग फिलॉसफी, मी एंड हिम, एंड देयर वर अ फ्यू अदर, वी हैड 4 roommates total. And I'm finding it so hard to wrestle with him. So hard to wrestle with him. Like, I'm like, bro, मैं, who's known for wrestling ideas back in India. And so this was the beginning of me realizing, now this is a big pond and I'm a small fish. Why is it important to wrestle with ideas? Let me come to that. Let me finish the point I was trying to make. This feeling took over the next 6-8 months. Not just that, I was fairly smooth here, like talking to people, charming, whatever, girls, this, that. वहाँ मैं गया, I think my second or third date, I got stood up and that was a shock. I was like, ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? Like, मैं बैठा हूँ, अभी हमारी आधे घंटे पहले बात हुई है, मिल रहे हैं, वो आई नहीं. And I'm just surprised what is happening. So from meeting my older brother, who was really like quite a monster, quite a beast intellectually, morally, in so many ways, and the right word is superior, right? That was very interesting. And then realizing, bro, यहाँ तो 18 साल का बच्चा भी इतना अकलमंद है, मेरे को तो पता ही नहीं सवाल क्या पूछना है. और मैं अपने आप को फन्ने खा समझता हूँ. So it was a grand humbling experience at first. And only once you're destroyed can you rebuild. And then without realizing, I was in rebuilding mode. And I'm having some of the most important years of my life in New York City at Columbia University, one of the best schools in the world. I'm going through my first depression there. I'm going through a tough breakup there. I'm going through falling in love in that place. I'm going through meeting a completely novel set of individuals who have a very interesting history. All of this is happening there. So I think I grew up in that 6-year period as an Indian guy who's not from India. समझ रहा है? Like I went from being I can access my देसी मोड. मैं हिंदी में बोलता इसलिए नहीं क्योंकि मुंह से गाली निकल जाएगी, पॉडकास्ट पे अच्छा नहीं लगता. फरीदाबाद से भाई मैं तेरे को बता नहीं रहा, कई बार तो मैं प्रोफेशनल सेटिंग में मुंह से बोल देता हूँ यार, क्योंकि मैंने जितना जब मैं हिंदी में डेली बात करता रहा, तो मैं फरीदाबाद रहता था. फरीदाबाद में कोई बात करता बिना गाली दिए. फिर मैं इंग्लिश में बोलने लगा तो मेरी इंग्लिश स्मूथ है उस सेंस में, इन लाइक इंटेलेक्चुअली आई थिंक इन इंग्लिश, राइट? सो it changed me completely. It changed me from being somebody who could have gone down a very arrogant, cocky road. And I know sometimes people will tend to label me regardless, but it changed me from that to realizing, bro, the world is so much bigger and there's so much beauty to be found. And unless you are willing to submerge, swim, be destroyed and be rebuilt, nothing is ever possible. Stop holding on to who you are. Find people who are far better than you. Always be the second or the third dumbest person in the room, right? Like, swim as hard as you can when you find those people, be with them, learn from them. And वो experience भी ऐसा होता है ना bro, when time went on, now everybody is somewhere. One of my friends is fighting the war in Israel. He's an Israeli soldier. One of my friends is now back in this state and that state and doing this thing and that thing. And so I've also seen the coming together of these individuals, aligning themselves around certain ideals and morals and then going away. It's a beautiful journey. So that's the answer to that question. As far as wrestling with ideas is concerned, भाई इंसानी प्रजाति बहुत, एंड फॉरगिव माय फ्रेंच, प्रजाति है. हमारी प्रोग्रामिंग है भेड़ चाल, और पर्टिकुलरली इंडियन आदमी की. हमारी जो स्ट्रॉन्ग साइड है ना एज एन इंडियन, विच इज वी आर अ कम्युनिटी सोसाइटी बेस्ड ग्रुप ऑफ पीपल, which probably is the reason, my guess is, that prevents us from having widespread depression and other mental health issues and loneliness. Because divorce rates. Well, divorce rates is a separate topic. But what prevents us from being so alone existentially that we succumb to depression is this social structure, right? But इसके pressures भी हैं. और उसके pressures का एक सबसे common pressure है, जहाँ भीड़ खड़े होकर हाँ बोल देती है, हम लाइन में लग जाते हैं. कुछ दिन पहले मैं दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद जा रहा था, तो the Uber I was in broke down on top of a flyover. तो मैं बाहर खड़ा हो गया, दूसरी ऊपर बुलाई. अब वो 10-15 मिनट लेगी आने में. हर आदमी को हमें देखना है, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये. पहले आदमी ने देखा होगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसके पीछे सारे आदमी ने क्यों देखा, क्योंकि पहला आदमी क्यों देख रहा था, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे. और ये हमारी नीयत है ये, ठीक है. So forget the world. Let's talk about Indians because तेरी audience largely Indian होगी. The reason why you should wrestle with ideas is because you're too easy to fool. And it will not take something more than just me speaking confidently to convince you of anything at all. And in fact, if I were to be completely truthful, if I were to go down to the bottom of the barrel, psychologically, philosophically, spiritually, you are already fooled. The reason why you must wrestle with ideas so you can unfool yourself, so you can finally wake up in some sense. Who fooled you? You yourself. You're the biggest trickster. Like, Ishan, what do you want in life?
Growth. Yeah, that's a fool's fucking approach to life, bro. What are you doing? Like truly, like if you really, अगर हम उसको फाड़ने लगे ना अच्छे से, तो तू realize करेगा क्या growth कहाँ है? और इस Nihilism है वो तो मतलब. नहीं nihilism नहीं है, वो waking up है. But तू उस growth के पीछे जो तू कर रहा है ना, the way you approach growth, say for instance, or the fact that you even try for growth, as if तू अगर कुछ नहीं करेगा तो growth नहीं होगी. क्यों नहीं होगी भाई? और इतनी नहीं होगी जितनी चाहिए. किस चीज में growth? In various aspects, physical, mental, career wise. And business. until you get that growth, you keep yourself slightly unhappy. You're like, अभी मिले नहीं है. नहीं, I love this journey that I'm on. Oh, you're loving the journey? I love this talk that you're having. Then let's say you are an exception, right? And do you think that is me fooling myself? No. Well, you can say, but okay, I'll take another common example. Love, right? Look at the commentary around love. Modern day commentary. एक तो हमारी बॉलीवुड कॉमेंट्री कि प्यार मिल जाए सब बराबर हो जाता है. Fooling yourself. ऐसा कभी नहीं होता. दूसरा, प्यार झूठा है, औरतें तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए पड़ी हैं और मर्द सारे कुत्ते होते हैं. वो भी झूठ है. Red pill, black pill. दोनों तरफ झूठ है. Both those sides are complete lies. Neither of them are true. But when we fall in love, we believe the first. When we fall out of love, we believe the second. So you are constantly fooling yourself, right? अब मैं ये नहीं कह रहा कि this is a slightly tricky, people may not understand, but when you are in one of those two zones, I'm not saying snap out of it and realize what is logically true. Because logic itself is a lie if you really go down to the bottom of it. Logic is an attempt to fool yourself. ये तो खैर सब existential, philosophical, spiritual है, but थोड़ा सा भी ऊपर आएगा. People chase success or chase growth because they watch Ishan. Ishan has successfully fooled his audience. Prakhar has fooled his audience into thinking you can articulate your way out of anything. That you can be confident for the love of God. Everybody is fooling each other. And unless you have the ability, the software to tackle your own set of ideas, unless you have the intelligence to discover who you are truly, you are not even living. That is the reason you are unhappy. And all of you are unhappy. Let me be fucking real. And so it begins with having the ability to wrestle with ideas because you're too easy to fool. Are you unhappy? Sometimes. Yeah. But that's how it should be, right? You cannot expect yourself to be always happy. No. That is also fooling yourself in some way. Matlab, we are getting fairly spiritual at this point, right? Right. Spiritual in the sense that we are talking about a level of psychology जो काफी deep है. See, happiness has two forms. There's joy and there's pleasure. If you seek to be pleasureful always, if you want to be always in pleasure, that's fooling yourself. If you understand that joy is right here and right now, that's not fooling yourself, that's waking up. समझ रहा है? तो of course I'm unhappy, but I'm very joyful in my unhappiness these days. बड़ा मजा आता है. वाओ, अरे unhappy हो रहे हैं, fuck, ये कैसे हो रहा है? Oh, crazy. ऐसा भी होता है. हाँ, वाओ, नहीं ऐसा तो होता है. वाओ, दोबारा आ गया, कुत्ते, फिर आ गया तू. Like, you know, it's that kind of a thing. अगर मैं इसको, if I borrow it into some kind of religious metaphor, this is all Shakti. And Shakti will show you good days and bad days. But it's all Shakti. You can't deny Shakti. You can't deny the unhappy part of Shakti. Are you truly enjoying it though? Are you truly realizing it, accepting it though? वो एक क्वेश्चन आ जाता है. कैसे रहेगा हैप्पी? एक दिन तेरे पापा को भी जाना है, एक दिन तेरी मम्मी को भी जाना है. रियल बात तो ये है. एक दिन तेरी बीवी भी तेरा दिल तोड़ेगी, कुछ भी कर ले, लड़ाई होगी, बच्चे भी तेरे को गाली देंगे, बोलेंगे पापा हमारे ऐसे ही हैं. तूने भी दिया है अपने पापा को, तो वो तो आना ही है. वो तो तू अवॉइड नहीं कर सकता. नहीं, मैंने नहीं दी पापा, देख रहे कर. अब तो सच बोल दे साले, कब तक झूठ बोलेगा? नहीं भाई. ठीक है. वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत सारी बातें यहाँ पे आपने करी. तूने जॉर्डन पीटरसन शुरू करा, तेरी गलती है. तू बोलता है ऐसी कोई अल्लू पल्लू बात, मजे आते. अल्लू पल्लू बात थोड़ी करने के लिए बैठे हम यहाँ पे. But what is one thing that we should learn from people in the US, going back to the conversation that we were having, and one thing we should not learn from them as Indians of our age? What should we learn from the States? I have an idea that is on the surface of my mind. I'm not sure if that is the one I want to go with. See, okay, yes, this is a good one. Okay? What we can learn from Americans is how they perform their civic duty. कोई नहीं देख रहा होगा लेकिन वो कचरा नहीं फेंकेंगे. कोई नहीं देख रहा होगा लेकिन वो ब्राइब नहीं लेंगे. Because they see that as their patriotic responsibility. हम लोग कितनी भी बात कर लें धार्मिक होने की, हम हैं, वी आर द बर्थ प्लेस ऑफ धर्मा. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, दरवाजा बंद होते ही मैं अंडर द टेबल 50,000 रुपए की ब्राइब ले ही लेता हूं. तो वी हैव नो अलीजियंस टू आवर कुल, to our community, to our country at that point. We don't see our civic duty as our patriotic responsibility.
what should we not borrow from Americans is consuming, let's say, the spiritual religious matrix. क्योंकि उन लोगों की सर्च बड़ी ऑनेस्ट है. वो एक्चुअली उस पॉइंट पे हैं जहां वो मटीरियली सेटिस्फाइड हैं और अब वो ढूंढना चाहते हैं जीवन का सत्य. दे आर राइट देयर, राइट? बट उनकी आदतें इज कंजम्पशन. तो वो स्पिरिचुअल को भी पकड़ते हैं और खा जाते हैं उसे. मैं अब ये हूं, लुक आई हैव नो ईगो सो आई एम बेटर देन यू. क्या फायदा हुआ? यहां पे भी आके उल्टा घूम गए. समझ रहा है? सो what we definitely should learn is how they treat their country. Frankly, it is better than how we treat our country and our community, no doubt. But how they treat their spiritual pursuit, they're so lost. They're so lost. There is many doors that exist in India to find who you truly are, and almost very few in America. That's what I recently visited Japan. Have you visited Japan? No. I had an amazing experience. Are you into that kind of pornography? नहीं ये पता है हंसा क्यों है? मैं बताऊं हंसा क्यों है? Did not go for that. There's something called as maid cafes. Have you heard of it? No. Maid cafes is very unique to Japan. So you go there. There are women who are dressed like the anime characters, and then they try to please you. And then the YouTube censorship happens. Yeah, I'm sure. So no, Japan is a famously sexually repressed society that has very interesting ways of expressing their sexuality. It is. Yeah. I'll tell you बहुत सारी चीजें हैं उसकी. क्यों? कैमरे पे क्यों नहीं? नहीं, but the biggest thing I should learn from Japan particularly is this idea of civic responsibility that you just talked about, and along with that, the eye for efficiency. They're efficient with every single thing. Yep. And they're process oriented. हाँ. Yep. हर चीज कायदे से होती है वहाँ पे. हर चीज के लिए नियम लिखा हुआ है वहाँ पे. ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा सब कुछ. एंड कुछ और करोगे तो फिर. And look at the irony, right? We are frankly the civilization that has more rule-based literature than any civilization ever, historically speaking. इतने वेद, इतने उपनिषद, इतने पुराण, उसके बाद कुछ हमारे जैनों में, कुछ हमारे बुद्धों में, कुछ हमारे सिखों में, इतना लिटरेचर है that talks about how society should be done. Then there are thinkers who were thinking purely on material planes. You have your Chanakya, Shankaracharya and whatnot. Everything is happening. And then Krishna comes in, says the most powerful thing in the Bhagavad Gita, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. प्रोसेस पे फोकस करना, जर्नी पे फोकस करना, आउटकम पे नहीं, वो मेरा काम है, राइट? और फिर भी हम भाई 50,000 रुपए दे दे टेबल के नीचे से, तेरा टेंडर पास करवा दूंगा. और जापानी लोग ऐसा नहीं करते ब्रो. राइट? दे हैव अ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर वर्क. दे आर मोर कर्म योगीज देन वी टेंड टू बी. And you know what is interesting about their religion? They don't have a deity. They don't have like a one god. It's called Shinto Buddhist है ना? Yeah. So even in their temple, right? We were like trying to understand क्या हो रहा है यहाँ पे. Right? So they bow down and then they throw that coin over there, and then they wish for something. And it's Buddhist, no, effectively. Not exactly. It is different. Buddhism is like China and all that, but Japanese religion is Shinto, and they don't believe in a god. They just believe in this one, something is there. Right. I asked my friend who was living in Japan for the last 5 years. He's working in Uniqlo, and he was like, यहाँ पे लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते, but they will still have some prayer before they eat food. And because of all the things that has happened to Japan, they've been like कि no one came to save us. We saved ourselves अपने आप ही खुद ही. Right? All the tsunamis, all the earthquakes, all the things that happened to Japan. Very interesting. And so that was very interesting for me to learn from them. But the thing that you should not learn from Japan is sexual repression. That, and this idea that because they have so many processes, वहाँ पे innovation इतनी ज़्यादा नहीं आती. जो US से जो बातें हो रही हैं वहाँ पे, वो वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है. Yeah, you have to break the rules to truly innovate. Exactly. Yep. And because वहाँ पे जो elder generation है, वो ही सब पूरा power सारे laws govern करते हैं. They don't let new ideas get executed. Sure. So there's always some things to learn, some things not to take from. It's a disease of order. It's a disease of order. Right? Masculinity, like agar hum symbolically baat kare, masculinity is order, right? Masculinity is rule based. And so when there is too much of that, which sometimes happens with very strict fathers, the kid's natural urges to explore and be chaotic are suppressed, and the kid hates the father. Very common in households. Isn't that every kid out there in India? No, sometimes the father is different and the mother is worse, and the mother is too chaotic. Feminine being too chaotic. And so the kid cannot have a simple order. They don't know how to operate themselves structurally through the day. तो वहाँ पे एक different problem होती है. India is a chaotic land. And India is Mother India in its true essence.
Japan is probably father Japan in its true essence. Yeah, like Daddy Japan. eventually all conversations I have end up in daddy issues. You started with the second father thing. brother मैं तो सच बोलता हूँ, बुरी अपने आप लग जाती है. नहीं, but you talked about this thing that you think in English. Yeah. And I think that's something that most people who are watching my videos, 20-something people, cannot yet. How do you get in that state? And You why don't is even that have important? to. मतलब देख, मेरी एजुकेशन और मेरे प्राइम ईयर्स, मेरे लास्ट 6 साल इंग्लिश में थे ना, तो इसलिए. ऑल्सो अगर तू सच में लिटरेचर पढ़ने बैठे जो कोई नहीं पढ़ता, कहीं कभी कोई नहीं उठा के पढ़ता, किताबें सब बातें मारते हैं, ठीक है. मैंने सारी इंग्लिश में पढ़ी हैं. I read all the continental philosophers, right? I read a lot of the psychological literature, all of this in English. So I think in English. I had to talk and communicate in English. In fact, when I had first gone, one of the obstacles was I could not emote in English. मेरे को इंग्लिश में फनी होना नहीं आता था, मेरे को इंग्लिश में गुस्सा होना नहीं आता था, क्योंकि हम तो फॉर्मली यूज करते हैं ना इंग्लिश स्कूल में. मैम में आई कम इन, Right. तो हमें तो यही आता है. बट ट्रूली अ फंक्शन ऑफ हाउ यू थिंक डिपेंड्स ऑन वेयर यू कंज्यूम थिंकिंग फ्रॉम. तो अगर कोई लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. अगर कोई भगवत गीता संस्कृत में पढ़ ले और समझ ले, तो संस्कृत में सोचेगा ना भाई भगवत गीता के अराउंड, राइट. द एबिलिटी टू हैव मेनी लैंग्वेजेस इज ग्रेट. मेनी लैंग्वेजेस आर ऑल्सो मेनी कैरेक्टर्स एंड पर्सनैलिटी इन यू. तो जैसे मैंने बोला ना, हिंदी में मैं सोचूंगा तो मेरे मुंह सिर्फ गाली निकलेगी, क्योंकि मेरा कैरेक्टर फन है हिंदी में, मेरे को हिंदी में मजे ही करने आते हैं. इंग्लिश में मैं थोड़ा जेंटलमैन टाइप हो जाता हूँ, राइट. तो मत सोचो यार इंग्लिश में, इतना कोई लोड नहीं है. और अगर सोचना है, देन स्टार्ट रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, टॉकिंग इन इंग्लिश एंड डू दैट फॉर 6 months एंड यू विल बी स्मूथ. Gentleman. हाँ, Gentleman बन जाओ. जेंटलमैन आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे, जेंटल्स कोई बता ही नहीं पाएगा, राइट. तो वो ऐसे ही होता है भाई. उसमें कोई देयर इज नो मैजिक और देयर इज नो सुपर पावर टू इट. वेल, अनलेस यू आर वर्किंग अब्रॉड, इन विच केस तुम अक्वायर कर लोगे. दैट इज नॉट समथिंग टू फोर्स ऑन योरसेल्फ. दैट्स एन ईजी गोल. That just happens. Tell me about conversations. Ask If me. I go to a public setting, I find someone interesting, You mean a woman? anyone, Okay. and I want to talk to them. And so describe the setting to me. Where are What? you? Let's say I am in a library, or I am at a mess in college, ठीक है. or I am in a mall, for example. I'm just going around looking at things, and then I see them, and I find them interesting, or they're saying something which I find interesting, or I'm in a metro, they're reading a book that I find interesting. Anything could be that. What is like a 3-step process for me to start a conversation with them? If I give you a 3-step process, you're not going to do it, but I'll do something better for you. Ask yourself, why don't you do it already? Ishan, why don't you do it already? I'm asking you. Do what? Like, just start a conversation. मैं genuinely पूछ रहा हूँ, rhetorical नहीं है साले. हाँ नहीं, nervousness होती है बहुत लोगों को. हाँ, nervousness क्यों होती है? That is what we have to figure out. No, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे को क्यों होती है? पता नहीं क्या बोलेंगे वो. हाँ, ठीक है. बात नहीं क्या बोल सुनेंगे सकते अगर. हैं? What is it that they can say that you don't want? क्या पता रिप्लाई ही ना करें. That is the biggest फिर क्या होगा? thing that people have. तो फिर मेरे को अजीब सा लगेगा. किसके बारे में? About what I've just said, and they have not replied. तो फिर उसके बाद क्या होगा? अजीब लगने के बाद 3 फिर सेकंड मैं बैठ जाऊंगा ऐसे awkwardly. फिर तू awkwardly बैठ जाएगा. फिर क्या होगा? कुछ नहीं, खत्म. फिर I'll feel bad about it later तो on. फिर इशू क्या है? हाँ, you'll feel bad about it. Yeah. Right. Then I'll be like कि अब तो किसी से बात ही नहीं करूंगा ऐसे. Right. As if तू दुनिया से खफा हो गया है. हाँ, कि पूरी दुनिया ऐसी है. Right. Yeah. The answer to what you're asking is, bro, most people don't think they deserve a conversation. No, listen to this. I'm genuinely saying, like, think about this. When you see somebody who you're interested in talking to, man or woman, right? You will generally be nervous only with more important men, people you actually want for their blessings to be around you, or attractive women. और किसी के around नहीं होगे, ठीक है? The issue there is you don't think you deserve a conversation with them. You think you're lesser than them. You think you're disturbing them. You think you are interrupting them. As if उनकी जिंदगी में कुछ इतना बेहतर चल रहा है कि तुम आ जाओगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी उन्हें. You've never truly put yourself in their shoes and realized their life is as shitty as yours. You don't think you deserve a conversation with them. 2, and here's the interesting part. If you do go say hello, you think you deserve a response. Because when they don't, you feel bad. Why? First of all, you don't think you deserve a conversation. Then you somehow manage to magically pick yourself up and be like, मैं जा रहा हूँ. और तुम जाके बोलते हो. And they're like, I have a boyfriend. Or, sorry, I'm having dinner with my family. Or, I'm sorry, I'm busy, I'm on a call. And you're like, इसने ये क्यों बोल दिया?
तो तू decide कर ले, which one are you? Are you the one who does not think they deserve a conversation, or are you the one who thinks that I deserve a response? Yeah, which one are you? And the 3-step process simply is pick yourself up, take the first 3 steps. And I'll tell you this is beautiful because होगा क्या, I've done this, right? Like मैं भी एक टाइम पे मैं भी नर्वस था भाई लाइफ में बड़ा ना, तो मैं खुद जाके ऐसे बात अब नहीं हो। अब तो बेशरम कुत्ता हूँ मैं, बट मैं ऐसे जाता था बात करने के लिए, मैं अटक जाता था, ठीक है, तो मेरे को किसी ने बोला एक स्टेप ले ले फिर आसान हो जाएगा। 4 दिन एक स्टेप लेके आसान हो गया। फिर मैंने बोला एक स्टेप के बाद मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना के फिर बैठा लेता हूँ। फिर किसी ने बोला 2 स्टेप ले ले आसान हो जाएगा। 2 स्टेप लेता रहा, चला जाता रहा। फिर 4 दिन के बाद वो मुश्किल हो गया। फिर मैं बोला 3 स्टेप, राइट? लाइक सो यू इट वॉज काइंड ऑफ ट्रिकिंग माई सेल्फ, बट फंडामेंटली आई नेवर थॉट आई डिजर्व्ड अ कॉन्वर्सेशन। एंड वंस आई स्टार्टेड थिंकिंग, डूड, ये दुनिया एक मेला है और इस मेले में मैं अकेला हूँ, लाइक यू नो, वंस यू स्टार्ट हैविंग दैट आउटलुक टू लाइफ वेयर दिस इज जस्ट फन, ये एक वाइल्ड जू है और इस जू में सब चल रहे हैं, इनको जाके कुछ भी बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा। एज लॉन्ग एज तुम्हारे दिल से जो एनर्जी निकल रही है वो सामने वाले को चमकाना, मुस्कुराना चाहती है, एज लॉन्ग एज ऑल आई हैव टू डू टू अ वुमन एंड से लिसन, आई थिंक यू लुक गॉर्जियस एंड आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट, लाइक आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। Such a cliche. But it works 10 on 10. 10 on 10 it works. You go Every to time. Well, every time, अगर every time नहीं मतलब but most times, क्योंकि every time काम करने के लिए उसकी भी तो कुछ psychology है ना भाई, वो हो सकता है actually ना interested हो, but my point is if you go to a woman and you're like, hey listen, I think you're gorgeous, I think you look so good today and I just wanted to let you know that I want nothing in return, she will say thank you 100%. Even if she doesn't want to continue that conversation, she will say that you've just given her a genuine compliment. So step 1, you think you deserve it. Step 2, want nothing out of it. See how I flipped both those points? The first one is you deserve this conversation. The second one is you don't deserve a conversation from here on. That you have to earn. So you say that I don't expect a response. Yeah. No. Never expect a response. Most of meeting interesting people in life is a sample space issue. You've only asked 5 people. I've asked 5,000, literally. That's why I know so many interesting people, and that's why I network my way through life like it's nothing. And then step 3, use less questions and make more statements. And this is a technical tip. Because statements invite more responses, questions invite. Questions के साथ ना तुम थोड़ा ऐसा आदमी को कॉर्नर करते चले जाते हो। हाँ, कि ये बताओ, ये क्या हो रहा है, right? So you just make more statements. Instead of the question, say, I wanted to say, Ishan. Do we assume? Yeah, exactly. I will never say, Ishan, how old are you? I'll say, Ishan, you're 22. And you'll be like, yeah. How did you know? And now you are invested in the conversation. So, इसको भी बड़ा थोड़ा ध्यान से करना होता है because initially you will have to ask questions and we can get into the technicalities, but largely it's a belief system issue. You don't think you're good enough. कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया है और फिर भाई वो करप्ट हो गया, आदमी बंद हो हम गया? करप्ट हैं, रिकॉर्डिंग क्या करेगी? अच्छा, बातें देखो भाई, बातें देखो बंदे की, स्मूथ टॉकिंग। Okay, too many compliments. Bro. I'm rizzing you up. I am rizzed. You want to see how wet I am? From the sweat that has occurred to me through the day of being around in Bombay. Please don't catch the wrong drift here. हाँ, ऐसे बात करनी होती है यार। मैं तेरे को सही बता रहा हूँ, मतलब मेरी लाइफ में मैंने ना, so I've done a very technical analysis of how you talk to people, right? Like really technical, more technical than people would imagine, because what you see in the book is a culmination, right? I've had 500-600 pages worth of notes of everyday interaction somewhere in my Google Docs, right? And after I was done with all of that and I'd really begun to master the art of conversation, I realized it boils down to a few fundamental things. One is feel like you deserve any conversation you're in. The second is have more fun than take more fun. Share fun. Give your fun out. Give your energy to them. Always give. And 3, never quite worry about the outcome. The outcome start rolling in ek din magically. People start responding without you even realizing कि क्यों respond कर रहे हैं, and then you're constantly surprised कि हो क्या रहा है. What is a great conversation? Where the other person is leaving happier than they came in. Full stop. Nothing else is needed. And then there are many ways to get there, you know. But yeah, that's it. Problem is, let's just say I go to a networking event. I go to a party. I am meeting some group of people. And I start talking to someone. I had that first sentence. They replied back. And now we're talking. But it's all just the small talk. Superficial. क्या चल रहा है लाइफ में? क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, okay. But how do you get to the depth of it? How do you genuinely create a connection? Look. If you have to the first. See, the answer to that is you can do whatever and it'll happen.
ठीक है, ये एक बड़ा टेढ़ा आंसर है और मैं ये नहीं कह रहा आदमी उस टेढ़े आंसर को करे, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस टेढ़े आंसर को ताकि तुम समझ सको पॉसिबिलिटी स्कोप कितना बड़ा है. ठीक है, सपोज मैं तेरे से पहली बार मिलता हूँ एक पार्टी में, ठीक है, और मैं बोलता हूँ हाई ब्रो, एंड नो, सो यू कम टू मी, लेट्स जस्ट अज्यूम इट्स वर्स, राइट? यू कम टू मी, यूर लाइक हाई ब्रो, आई एम लाइक हाई, यूर लाइक मौसम तो बड़ा अच्छा है, एंड आई एम लाइक हाँ मौसम तो बड़ा अच्छा है, एंड यूर लाइक आप क्या करते हो? मैं बोलता हूँ भाई कुछ नहीं, मैं बातें बनाता हूँ, एंड यूर लाइक अरे वाह मैं भी बातें बनाता हूँ. सपोज दिस इज हाउ द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग एंड डाइंग, एंड सडनली आई विल स्टॉप यू, बी लाइक एक बात बता, तेरे को डर किस चीज़ से लगता है? तेरी फटती है? मैं तेरे को रोक के बात बोलूंगा और एक सेकंड के लिए तू बोलेगा ये क्या कर रहा है, एंड देन तू मेरा चेहरा देखेगा एंड यूल सी आई एम एब्सोल्युटली सिंसियर अबाउट आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. और and I don't recommend you do that. Only people who are completely okay with who they are can pull this off. I'll stop you and be like, bro, तूने last time great sex कब किया था? Right? And I'm telling you, it sounds funny, but it's completely pull-offable. I'm not saying you should do this. I'm saying that the way you can get deep in any conversation is literally whichever way you prefer. Whichever way. You can ask them a deep question, which is the most direct thing, and truly hold frame. Like, I mean this question. I genuinely mean this question. Ishan, tell me right now on the podcast, when was the last time you had great sex? Which is your last life? But you see the point, like I can literally ask you this question on your show while we are having a serious conversation and you'll answer because I mean that question and I'll say I mean this question, right? But sab log ye pull off nahi kar sakte because if the other person like what the hell, you don't know what to do from there and that is going to trip you off. So let's do something rather simple, right? Let's have a pretend conversation. You can pretend to be whatever. You can give me whatever answer. And I'll make conversation out of it. You can be as hard as you want in trying to have this conversation. There is a like. I can be the most uninterested. तू बिल्कुल disinterested हो जा, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि तू अगर बहुत ही disinterested है, जो कि बाहर के ज़माने में भी होता है, तो नहीं होगी conversation, but it will still be longer and more meaningful than other people's, right? So let's try and have this conversation. I just met you. Hi, what is your name? Hi, I'm Ishan. Ishan. This is your name? Okay. Ishan, who gave you this name? I don't know, my parents. Do you know which one? Mother, father? I don't remember that. You know, sometimes I've often thought, you know, when people ask you this question, who are you closer to, your mother or your father? And I'm like, when I was younger, I was closer to my mother. But as I've gotten older, I'm closer to my father. You know what I'm saying? Yeah. Do you relate to that at all? Yeah, I used to be much more closer to my mother than I am right now. And I've started to resonate and empathize more with my father the more that I grow. What did your mother do wrong for that to happen? See, we are already in a territory. Right. It took nothing. Right. एंड अभी तो मैंने फिर भी इसको मजाकिया ले गया. इसी चीज को मैं और क्यूरियस वे में भी ले जा सकता हूँ. ठीक है? सो से फॉर इंस्टेंस, व्हाट डू यू डू? I get paid to talk to the camera. Wait, what does that mean? I'm a YouTube creator. YouTube? Yeah. That's very interesting. How does one end up doing YouTube for a living? But that's the thing, right? Like people ask me this question all the time and I'm like, arey yaar. ठीक है, I understand, Yeah. right? Like I understand. And then I'm just like, No, I get it. That could be you and that could have something to do with you than them because they're genuinely following their curiosity. And तू एक famous आदमी है, तेरे पास 50 लोग आके सवाल पूछते हैं, सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता. But what I was trying to illustrate there is I just went in with genuine curiosity. I'm just genuinely asking the most obvious and the most direct and the most important question to me from the last thing you said. And if I genuinely follow that, I will end up in the right place. I will end up having a deep conversation. The trouble is I'm too afraid of taking a risk. I'm too afraid of saying, dude, I've never seen your content. Dude, I never watch YouTube. I'm just too afraid of saying, listen, I might sound stupid, but I have a question. I'm just too afraid. And so you stick to small talk out of fear. You can choose whichever way to get into a deep conversation. That is the simplest thing. That is the most human thing accessible to you. All you need to do is turn inwards and see what do you want to know. What do you want to say? And then say it. And initially, the first maybe 100 attempts, you will be super nervous taking a risk in conversation. What a risk means, by the way, we cover extensively in Art of Conversation. Shameless plug. If you want to learn more, come to artofconversation.in. And then there is some other techniques like instead of question answer, do question answer statement wait. I teach this in my workshop also. But all I have to do is genuinely follow my curiosity. Put a little technical sprinkle on top and it makes for great conversation. Great, brilliant conversation. And you learn more from people than you would ever do from books. Ever. Because that is experienced as opposed to reported. but here's the thing. Most of the people who are watching, not most, I think some of them have had a schooling where they were in like a boys' school and a girls' school. And so when they go out in the real world, they find it very difficult to talk to the opposite sex. Isn't that not fun? Like that is the most fun part.
I, for one, am bored of talking to girls at large because I am no longer nervous. Sometimes I am, and then that's great. Well, I haven't had to, frankly. Luckily, I'm in a very happy relationship for the last 2 years or so. But like, I remember the minute I was like, ab to main baat kar sakta hu. Then it stops being fun. It was only fun until it was difficult. क्योंकि तब एक एडवेंचर है, गाड़ी कहाँ जाएगी. तभी तो लोगों को गाड़ी तेज चलाना पसंद है, क्योंकि उसमें एक एडवेंचर है. गाड़ी स्लो चलाने में किसे मजा आता है? Let's be real. So you're saying that we are attracted to people who we are a bit nervous with talking to? No, I'm saying what fear is made out of is the same substance that excitement is made out of. It's a reframing issue. You have to look at it properly. रोलर कोस्टर में घुसने से पहले डर लगता है, चालू होते ही एक्साइटमेंट होती है ना. सेम ही तो चीज है. मेरे को पूरा टाइम डर लगता है. हाँ, बट तेरे को उसको you have to, अगर if you are able to convince yourself you're not going to die, then you'll have fun instantly. You fool yourself saying that you will not die. And bro, you don't fool yourself. That is probably the truth. 99.99% you're not going to die. Yeah. Similarly for life, where you are going to die, if you are able to convince yourself you are going to die, because we walk around thinking we'll never die. Again, we're touching the spiritual part here. अगर तू genuinely realize कर लेता है कि हम सब मरने वाले हैं, genuinely, कोई नहीं मान के चलता वो मरने वाला है. सबको लगता है हम अमर है, सॉरी, हम अमर है और कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है. अगर आदमी समझ जाए कि आज है और यूं खत्म है कल, तो लाइफ के सारे धक्के और लाइफ के सारे चौके बड़े खुशी, बहुत मजे आते हैं, बड़ा मजा आता है, रस आता है उसमें. अरे वाह, इट बिकम्स लाइक अ रोलर कोस्टर. ये कैसे करें? वेल, तू श्योर है? यू वांट टू गेट इनटू दिस? या. सो how do you fool yourself into thinking that? It's not fooling, it's actually waking up. Okay. This is waking up. Realizing you will die is waking up. The only truth you need to know, the only, see, I'll say something which some people might get triggered by, but that's my speciality. Think of the word Sanatan Dharam. Dharam being truth, Dharam not being religion, and Sanatan being eternal. What is the one eternal truth? That you live and then you die. You die, full stop. Yaksh, famously, Yaksh is a water spirit. Water spirit Yaksh asked Yudhishthir this in one episode of the Mahabharata. एक दुनिया का सबसे अटूट सत्य क्या है, or something of that nature, and Yudhishthir says मृत्यु, death. And so once you are completely aware, this is not fooling yourself, this is waking up to that reality. How we'll get to? You live life very differently. This is probably, if not complete enlightenment, amateur enlightenment. ठीक है? अब how do you do that? उसके लिए there are methods, bro. And you can think of many methods. Yoga is a method. Vipasna, which is the method I prefer. Vipasna is a method. Psychedelics, which is a method that is growing, again, very popular in the West, is a method. There are many methods. Praying, being in touch with God, which is a universal method, is a method. Let's see what else is a method. Actually surviving an experience where you almost died is an accidental method. कार क्रैश हुआ, तुम बच गए, और या फिर शमशान घाट पे खड़े हो जाओ, जाके देखो जलते हुए लोगों को. दैट इज अ मेथड. Once you truly wake up to the fact that you will die, that is the day you start living. उससे पहले तो तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो. उससे पहले fooling yourself चल रही है. ग्रोथ कहाँ लेके जाएगा? छाती पे? क्या हो जाना है तेरी ग्रोथ का? सोच के देख, कितने फादर्स हैं who ran around chasing growth और उनके बच्चे उन्हें गाली देते हैं कि पापा कभी घर ही नहीं थे. पापा के मन में ग्रोथ चल रही है, तो क्या मिला ग्रोथ करके? बच्चे की गाली. समझ रहा है? और कुछ लोग थे जिन्होंने बोला हम कभी ग्रोथ नहीं करेंगे, हम बच्चे के आसपास रहेंगे. उनके बच्चे कहते हैं क्या पापा कभी काम ही नहीं किया, आलसी हो. क्या मिला ना काम करके? So they will be misery irrespective of what you do. Unless you wake up to the fact that you will die, there will always be misery. Because you'll always be chasing bullshit goals like growth and success and money and love and sex and freedom. Well, freedom, again... Freedom is a good goal to choose. Depends on how you describe freedom. I meant freedom in the sense of, मैं कहीं भी travel कर सकूँ type financial freedom. Unless, और उसका भी, देख, इन सब चीज़ों का एक utility है. But when they become your central targets, you are sure to find disappointment. And you are sure to find disappointment until you realize in this life or the next, however your metaphysics, tu manta hai ki nahi agli life mein, in this life or the next or in the 20th life from now, until you realize that the actual goal is to die properly. Everything else is a byproduct. Success comes, money comes, love comes, sex comes, freedom comes. Everything comes from realizing that you're going to die. So the real question is not how I want to live, but how do I want to die? And then you live your life for that. How is it in our control? Good question. This is probably the first good question. What do you expect will happen when you die, when you're dying? For you, क्या होगा? तू मर रहा है, suppose. Imagine करते हैं. Shut down system. नहीं, वो तो ठीक है. वो तो मतलब तेरा functionally हो रहा है. तेरे दिमाग में क्या हो रहा है? Suppose वो 3 दिन है. तेरे को डॉक्टर ने बोला आपके पास 1 ही हफ्ता है. अब तेरे साथ क्या होगा?
I'll evaluate. I look at what do I really want to do, what do I have left to do. Or how will you feel? I'll feel free, You'll feel free. knowing that I'll die in 3 days. So, well, you have already begun understanding what it means to wake up and what freedom is. Because a lot of people will feel fear. A lot of people will feel disappointment. A lot of people will feel regret. For the initial 5 minutes or so. No, bro, think about it. The minute life is escaping you, this is what is happening inside you. And the metaphysics of rebirth says that, or the dharmic metaphysics, by the way, for people who do not know, means rules that describe how the world works. ठीक है? Philosophy of philosophy. ठीक है? तो अगर धर्म एक philosophy है, उसकी philosophy क्या है? वो metaphysics of धर्म होगी. The metaphysics of dharma says that what happens right before you die is carried on to your next life. So most people carry on into the next life because they feel these fears, these disappointments, these attachments, these regrets right before they're about to die. But like you said, I will feel free. तो 3 दिन की क्या वेट कर रहा है? मैं तेरे को अभी बता देता हूँ. तू 30-40 साल में, 50 साल में, 100 साल में मैक्सिमम मर जाएगा. हो जा फ्री अभी. उठना. उठ जा. क्या हो गया? And this is what I mean. So the minute you realize you're going to die, you actually start living. उससे पहले तो तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो. उससे पहले तो तुम एक दीवार से दूसरी दीवार में टकरा रहे हो, होपिंग कि इस दीवार से मैं खुश हो जाऊं. काफी डीप हो गया पॉडकास्ट. आई वाज लाइक कि हम थोड़े से ऐसे कॉन्वर्सेशन वाली बातें करेंगे, हम ऐसे सिर्फ की बातें करेंगे, फ्लर्टिंग के बारे में बात करके नहीं खत्म कर सकते. थोड़ा ग्रेट सेक्स की बात करेंगे. बट तू सोच के देखना. सी, लुक एट ब्यूटी एज अ कॉन्सेप्ट. ठीक है? क्या होता है ब्यूटी? ये फेक है ना? उठा के दिखा दे कैमरे पे. दिस फ्लावर पॉट, राइट? दिस इज फेक. सो अनब्यूटिफुल. If this was a real flower, as compared to a fake whatever, would it not be different and much more beautiful? It would be. You know why? Because it's about to die. That is the difference between a first love and a very long marriage. Because when you first fall in love, you don't know if this will survive. You realize the impermanence कि ये फिसल रहा है हाथ से, पहला प्यार है, 5 दिन ही हुए हैं, निकला जा रहा है. जाने नहीं दूंगा. हाँ, तो वहां पे क्या आ जाता है? वहां पे एकदम से प्रेम उठाता है. पर जैसे ही वो शादी बन जाती है और अब तो पता है मरते दम तक साथ रहना है, वैसे ही वो नकली फूल हो जाते हैं. ब्यूटी लिव्स इन द फैक्ट कि थिंग्स आर दिस टेम्पररी. तभी तो कहते हैं कॉलेज के दिन एंजॉय कर लो, फिर दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इम्परमानेंट है. परमानेंट तेरे को कॉलेज में डाल दूं, मर जाएगा बोर होके. क्या बोलेगा? यही है, रोज जाओ, दारू पियो, पार्टी करो, बस यही बचा है. सो इट इज दिस रियलाइजेशन ऑफ इम्परमानेंस इन द ग्रैंडेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड that truly wakes you up to the fact that you will die. And once you realize you will die and you're really sure that you will die and you understand that you will die, you begin living properly. उससे पहले तक सब is fooling yourself. सब मोह माया उससे पहले. वो वैसे, हाँ, मतलब उसको ऐसे फ्रेम कर ले. मोह माया थोड़ा और टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या करेंगे. बट हम बात कर रहे थे उसकी. अगर कोई फ्लर्टिंग की, हाँ. नहीं फ्लर्टिंग की बात. वी वर टॉकिंग अबाउट इफ समवन हैज जस्ट बीन इन अ बॉयज स्कूल और अ गर्ल्स स्कूल एंड नाउ दे वांट टू स्टार्ट टॉकिंग टू द ऑपोजिट जेंडर. What do they do? Okay, so I'll tell you what you need to do. First of all, you have to understand कि डर 2 लेवल पे लगता है. साइकोलॉजिकल, जो प्रखर एड्रेस कर सकता है ये सारी फट्टे मार के कि तुम मर जाओगे, ये वो. और उसके नीचे फिजियोलॉजिकल, विच इज योर बॉडी, योर नर्वस सिस्टम रिएक्टिंग. एंड द वे योर नर्वस सिस्टम रिएक्ट्स, इफ यू आर गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, palm sweaty, shaky knees, stuttering, not knowing what to say, blanking, looking down, like all these different ways in which your body reacts. ठीक है? जो ये सेकंड फिजियोलॉजिकल फियर है ना, इसको आउट प्रोग्राम करना होता है. और इसको आउट प्रोग्राम किया जाता है थ्रू एक्सपोजर. तो तेरे चैनल पे तो आई एम श्योर, बट यूनिवर्सली आजकल ये कोल्ड शावर का टंटा बहुत फटने लगा है. आई डोंट गेट इट. आई टेल यू व्हाट इट इज. इट इज बेसिकली फियर एक्सपोजर, पेन एक्सपोजर, cold exposure, right? Slowly getting used to uncomfortable. It is literally telling your mind, कोई नहीं भाई, थोड़ा uncomfortable हो गए तो क्या हो गया. I used to do this back in 2017-18 when I first got into America. Partly to shock myself out of my head, my thinking mind, and get me into my body, my feeling body, right? I did this 2 years ago. So till that time, I had only been talking to the camera. I would sit for hours on end and I would just talk to the camera. And before that, I've never had friends. And I had never socialized. I was a typical Sharma ji ka beta. And then I was like, I'm going to do events. I want to do shows. I want to have live audience of 1,000 people. Right. Looking at me, looking to learn something from me. Wow. And I did it. Okay. 30 events done. And so when you do that, what you really do is out-program yourself from fear on the physical level. And once the physical is gone, the psychological is easier to tackle. Right? This is also something that the West gets better than Indians. Indians,
Because they have doorways to spirituality and religion more accessible than the West, they think all problems begin and end with the mind. They do not realize that without a proper physical base, all spirituality ends up being nonsense. Partly because अगर भाई खाने को खाना नहीं है ना, तो तुम करते रहो प्रार्थना पूजा. जैन बुद्ध भी तुम्हें बताएंगे खाने को त्यागना, पर उसके लिए होना पड़ेगा ना भाई. फास्टिंग करने के लिए एक्चुअली खाना होना तो पड़ेगा. So you solve for the physical, which is exposure. You go up to somebody, use this exact line. Hey, I think you look very pretty today. Don't say gorgeous, don't go extreme. I think you look very pretty today. That's all I wanted you to know. And I hope you have a great day. Pause. Let her say thank you. Be like, you're welcome. Have a great day and leave. Do this 10 times. फोन नंबर कैसे मिलेगा फिर? पहले निकल तो पहले इससे तो निकल. Okay. First you have to get out of this. ठीक है? As far as phone number कैसे मिलेगा, पेन पेंसिल निकालो और ये लिखो artofconversation.in. क्योंकि ब्रो मतलब मेरे को समझाने में ना इट्स there's many angles to it and it'll take longer, but effectively I'll give you the short version. So you get in now, instead of saying hey you look very pretty today and उसके बाद का जो I just wanted to let you know that, just say hey you look very pretty today, I just wanted to tell you that. She says thank you and then introduce yourself. My name is Prakhar. I'll just be 2 minutes. Give a false time constraint. इसको false time constraint कहते हैं. I'll just be 2 minutes. I have my friends are waiting for me downstairs. I just wanted to let you know. So what is your name? Conversation begins. Have that conversation. Don't talk sense at all. Talk nonsense. Have fun. Throw in random stuff. Tease her. Do all of that jitter jatter. And as soon as you're done doing that jitter jatter, then be like, you know what? I have to run. You have an Instagram, right? Then after you get the Instagram, talk for another 2 minutes. Random nonsense. Because if you leave right then, the odds of responses Out of mind or out of sight. No, not just that, but uske dimag mein the registration is ki this is transactional. And Indian girls are very sensitive to that. So you stay there 2 more minutes, talk shit. Be like, damn, I got late talking to you. And then leave. And then it works out. How many times have you done this? Road map bana diya bhai. I met my present girlfriend, not exactly like this, but yeah, somewhat like this. I've had long-term relationships sprout up in front of me. What is the longest relationship you've had? 3.5. You're 28 right now. I'm 28 right now. 3.5 to 4 years. That was when I was 20. I was 19 or 18 when I started dating her. When you look back, was there like a rule that you guys had that helped you have a long? No, we just liked each other. I would like to think that. I don't know what my ex thinks. Right? Yeah, I've always been a long relationship kind of person when I found like, I don't know when people say bro लड़के और लड़कियां नहीं है मार्केट. मेरे को तो इतनी अच्छी लड़कियां मिलती हैं, मेरे को तो कोई कमी नहीं लगी आज तक ब्रो. कहाँ से मिलती हैं? ऐसे ही सड़कों पे मिल जाती है. Like उसमें तो कोई देर नहीं लगती. I've also never had trouble with that luckily, but all the long-term relationships I've had were kind of friends introducing us, right? And like why that lasted for so long is because, well, I think both of us genuinely gave a shit about each other. Genuinely. Like it was not, well, sure, there were some immature elements and we would fight a lot and there was a lot of that. We were immature. But I think we genuinely gave a shit about each other. And I think that's true for all serious girlfriends I've had. Yeah, I found beautiful relationships. They've always ended tragically, but I found beautiful relationships. Would you go back and do the same thing over again knowing that it ended? Yeah, 100%. That's the beauty of it, na? We discussed that. Like now when I look back, I'm like, वाह यार क्या time था. It's never like क्या कर दिया. Regret नहीं होता. मतलब ही नहीं है. In fact, I wish them the best. At some point, I don't know when, they will all find more long-term partners if they haven't already, right? Wish them the best. And the guys are so lucky to have found them. Right? Like. ये वाली बातें नहीं करते हम अपने चैनल पर. I don't know. We will. I am starting to talk about these things more. Yeah. But I think that the more underlying layer of that is to become a better person. Yeah, well, nonsense. How do you become a better person? That's what my question to you was. How do you become a high value person that people want to talk to and they're like कि भाई ये बंदा या ये बंदी कुछ फोड़ रही है लाइफ में. यार वही ना, चल मैं तेरे को इसको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है? There are 3 stages to understanding, let's say, what kind of person you can be. ठीक है? First, you are somebody. The world will train you to be somebody. तू ईशान है, तेरा नाम ये है, तू ऐसा है, तू ऐसा है. पहले तेरी ट्रेनिंग होती है.
Once that training is complete and you've successfully become somebody, then the world will train you to become somebody special, which is what you're asking me. How does somebody become somebody special? Right? How to stand out. Yeah. And when you go down the route of becoming somebody special, you might spend a lifetime trying to become somebody special. In some sense, I'm lucky. At least in this present moment, I'm lucky. Where I come to realize there's nothing quiet to becoming somebody special. इसको हिंदी में अगर मैं डिस्क्राइब करूं, पहले तुम दर्शक होते हो. दर्शक समझता है? फिर तुम दृश्य होते हो. दृश्य समझता है? दृश्य मतलब sight to look at. So first you are the audience. You're the viewer. You're the viewer. Then you are the object of viewing. But आँख खुलती है जब तुम दृष्टा बनते हो, which is, how would you say, the neutral observer, the awake eye in some sense. ठीक है? And so to finish that analogy in English, first you're somebody, then you're somebody special, only to realize you're nobody and you're everybody. This is the end of the spiritual matrix. But let's cut the spiritual matrix out. Let's answer, how do you become a high value person? Okay? See, there is a million ways to become a high value person. You can become rich in your high value. You can become good looking, your high value. You can become jacked, your high value. You can become disciplined, your high value. You can become caring in your high value. You can become high value in all these different ways. It's like becoming meetha. So the cheaty is attracted to you. But cheaty वहाँ घर नहीं बनाएगी ना. घर वो कब बनाएगी? वो एक different equation है. So when people talk about becoming high value, for instance, State and the Red Pillars will talk about becoming high value, it will attract women to you because that's their angle. I'm not saying that's the reason why you become high value, but it won't keep them around. And so look at what Tate will say about women. ये तो ऐसी ही हैं, तुम्हारे साथ बुरा होगा, छोड़ जाएंगी. That begs the question, Tate, what have you done wrong in attracting women that वो छोड़ जाती हैं? Maybe you've led with the fact that you're high value. Maybe they were there for the high value, and when you were not high value, they left. So my larger point here, Ishan, is high value होने का फायदा क्या है? क्योंकि एक दिन तुम्हें lower value भी होना पड़ेगा. फिर जो आया high value देख के वो टिका नहीं. Low value क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि लाइफ है भाई. कभी टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तेरे हाथ में है, बता दे. नहीं है ना, फिर कभी ना कभी तो टूटेगा. किस टाइप की एडवाइस चलती है रेड पिल में? अपनी औरत के सामने कभी मत रो. किस टाइप का इंसान रोते हो अपनी औरत के सामने, पसंदीदा औरत के सामने? मर्द अपनी पसंदीदा औरत के सामने. यार मतलब तुम्हारी लाइफ में हार्ड मोमेंट्स नहीं होते? Don't you have tough shit in life? And so do you not want a partner that can handle you in those moments? I'm not saying be weak. That's not the same. I'm saying कि ये किस टाइप की एडवाइस है कि तुम अपनी पसंदीदा औरत के सामने रो भी नहीं सकते? Well, अगर वो आई ही इसीलिए थी, or vice versa, you know, it can operate in the other domain also. So the larger point I'm trying to drive is, हाई वैल्यू होने के लिए कुछ नहीं करना भाई. एक लंबोर्गिनी रेंट कर ले और ऐसे गुची उची के कपड़े बलेंसियागा वगैरह पहन के निकल जा मार्केट में. My argument is slightly different. My argument is, particularly if you're sure you're going to be high value, अगर तेरे को पता है सक्सेस इज गारंटीड, तेरे केस में, मेरे केस में, इन सब के केस में जो देख रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत करने वाले कहाँ जा रही सक्सेस. तो I would much rather not lead with the kind of success I have. I would much rather not lead with the kind of high valueness I possess. I would much rather lead with my raw and unfiltered personality. ताकि layer 1 पे ही pre-selection हो जाए. The difference is between having an abundance mindset, कि मेरे को तो मिलना ही है, I'm going to find love, and having a scarcity mindset. जहाँ मेरे को मिलना नहीं है वहाँ मैं impress करके लूँगा. जहाँ मेरे को मिलना है मैं एक्सप्रेशन पे फोकस करूँगा, जो हट नहीं होंगी वो वैसे भी रास्ते से हट जाएंगे. And so maybe this is a point too complicated for people, but what I'm trying to drive is, you don't become a better person and therefore attract people. You let your raw side out and attract the right people. And I think you should focus on that. And I let think the raw side out on the first meeting itself. Incrementally, but you know, it depends on the load you can handle. So about being a high value person, bro, it's not so much, don't lead with the high value as much as you lead with the completely raw part of you, right? Because मैं तुम्हें बता रहा हूँ, bro, what keeps a relationship together is not how good things are, but how you manage the worst. कहाँ पे टूटता है relationship? It is when both of you are at your worst. कुछ बहुत बुरा चल रहा है and it just snaps. You give up. And you snap. You snap. Something happens, you do an unforgivable mistake. You cheat, you lie, you steal.
You leave the home and don't come back all night. And that's when relationships go to shit. Things are very tough. COVID has occurred. You're out of a job. That's when relationships break. And so I found that there is a certain beauty to finding long-term relationships when you encounter trouble, tragedy in the early stages of it. जैसे ही वो ट्रेजेडी आ जाती है ना, और अब तुम्हें रियल होना पड़ता है यार. अब तुम्हें एक्चुअली बियॉन्ड योर फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेरे मसल्स कैसे हैं और मेरी जेब में बैंक बैलेंस क्या है, अपने अंदर के भीतर की आत्मा को निकाल के उसकी आत्मा को पकड़ना पड़ता है और बोलना पड़ता है कोई नहीं, मैं हूं यहाँ पे. वहीं प्यार हो जाता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है और फिर वो नहीं टूटता. तो अच्छा, अब ये सब बकरचोदी करने के बाद एक सीरियस लेवल पे बता भी देता हूँ हाई वैल्यू इंसान कैसे बनते हैं. ठीक है भाई, वही है, देख, बॉडी बना ले, सक्सेसफुल हो जा, बहुत मुश्किल नहीं है दोनों काम, और अच्छे अच्छे कपड़े थोड़ा ढंग से पहन के निकलना शुरू कर. ज़ारा वारा, ठीक है, that sorts your first impression out. Personality level पे it's quite the opposite. When you do everything to signal you are not high value, it signals you're high value. When you say stupid shit, when you don't care about their response, when you say something without hoping कि अब ये positive response लाएगा, when you don't try to impress, right? When you crack a joke that's somewhat bordering on like he probably should not have said that. Yeah, he probably should not have said that, right? When you behave in a way where you don't care for the response, it signals massive high valueness. Because the other person feels like, भाई इसको फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, वहीं पे गाड़ी बन जाती है. Or I can give you endless examples of how that happens. So on a personality level, you have to come to a place where you don't care about the response. And the paradox is, if you have 0 people, you will always care about the response. But if you have 25 people constantly texting you, you just don't give a shit. That's why guys and girls find people into them much more when they're dating. क्योंकि अब मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ हाँ यार, like I'm just texting her without thinking. She's like, bro, ये कौन सा बंदा है, इसने पू को मुड़ के नहीं देखा. And that draws. So on a personality level, to become high value is to signal you don't care on some level. That's why bad boys work. Because bad boys behave like they don't care. हाँ, ये क्या होता है? There's a thing that nice guys always get friend zoned या फिर इस तरह की चीज. Because nice guy signal क्या कर रहा है? आप मेरी आत्मा कुछ भी कर दूंगा, मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा. तो उसको क्या पता है कि इसके पास और ऑप्शन नहीं है ना. और बैड बॉय क्या कर रहा है? हाँ चल भाई, हाँ चल. उसको लग रहा है यार इसके पास कितने ऑप्शन है. एंड पीपल आर अट्रैक्टेड टू व्हाट दे कांट हैव. People are attracted to the chase much more than to the person. So psychologically, interactions work opposite of what the truth is. If you were a high value person, I would say mix extremely charming, chivalrous behavior, like opening the door and like, pulling her chair, with absolute nonsense and I don't care conversation. And the word is fuse her electric light bulb of her mind. उसको समझ ही नहीं आएगा इसकी प्रॉब्लम क्या है. ये कभी इतना वार्म है और कभी इतना कोल्ड है. उसका ये प्रो फ्लर्टिंग टिप है. मतलब वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, इसकी ये है क्या, what is this enigma? Because sometimes he gives attention to all these small details and then he does not even give a fuck about the big ones. And what is happening? And the chase is automatically created. But I don't recommend this. I advise this, but I don't चिक के सबको स्कीम बता दी. You used this word charisma, and this is like the word of the year 2023. Rizz. Yeah. Rizz क्या होता है? And how to get Rizz for people who are watching. लोग ऐसे हैं, पैसा नहीं है, skills नहीं है, body नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करे बंदा? फिर इन चीज़ों पे फोकस कर ले यार. अगर उनकी डेफिशिएंसी इतना ही हर्ट कर रही है तो why do the unnatural when the obvious is in front of you, right? Like why complicate this simple sort of decision in life, right? I feel also, Ishan, and this is sort of a meta confession, I feel like I'm coming of age where these questions, and I don't mean this as an insult at all, where they are no longer as interesting to me as they were when I started YouTubing. So I don't delve into all the technicalities as much. मेरा पुराना content देख लो, उस पे काफ़ी है. But see, अगर तेरे को लगता है कि बॉडी या मनी और सक्सेस इज कमिंग इन द वे, देन फोकस ऑन दैट, राइट? आई हैव ऑलवेज फाउंड, एक टाइम पे आई वाज अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग टू फिनिश माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी. एक टाइम पे आई वाज अ स्टूडेंट इन अमेरिका विद वेरी लिमिटेड बजट्स, राइट? बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ बजट टू सेंड यू देयर एंड कीप यू देयर. आई हैड नो प्रॉब्लम डेटिंग. I had no problem dating because charisma existed, luckily, touch wood, with God's grace, with the right company and the right sort of mentorship. But whatever. The point is, charisma is a combination of
having fun, because at the end of the day people just care to have fun. हम मजे कर रहे हैं, सबको मजे आ रहे हैं, गारंटी बता रहा हूँ. हम फ्लो कर रहे हैं, हमें नहीं पता 1 घंटा हो गया, किसी को नहीं पता लगा 1 घंटा हो गया. ठीक है, फंडामेंटल. सो हैविंग फन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Number 2 is dropping a mix between hot and cold signals, because confusion is, or rather mystery is the birthplace of seduction. And 3, being completely non-judgmental. This is probably the trickiest thing to pull off in most conversation. But if you can manage to be completely non-judgmental, seduction is one step away. And I don't mean just sexual seduction. I mean like interpersonal seduction, where the other person feels completely relaxed around you. Samajh raha hai? So, all in all, it's a combination of a few things. And even if you master one of these things, all the others kind of get compensated for. I've had friends who had one or the other of this, and it works like magic. So, one of my closest friends, one of the most handsome men I've known in my life, right? His name's Hardik. Shout out Hardik. Hardik's a charm around the ladies. It is so difficult to separate Hardik from women, right? And I think what works very well for him is zero judgment. Hardik operates in the Goldilocks zone of zero judgment. He doesn't even judge his own stupidity. हम तो खुद ही को जज कर रहे हैं ना भाई, हमने क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया. वो तो खुद को भी जज नहीं करता, सामने वाले को क्या करेगा. He is perfectly fine being himself. Because the labels you use to judge others, अगर मैं बोलता हूँ ईशान, सपोज मैं बोलता हूँ ईशान तो फुद्दू है, सपोज डरपोक है, वो लेबल मैं खुद पे भी यूज करता हूँ कि मैं या तो ब्रेव हूँ या डरपोक हूँ. लाइक सो द लेबल्स यू यूज टू जज अदर्स इज द सेम लेबल यू यूज टू जज योरसेल्फ. इफ यू से वो अमीर है तो तुम खुद को गरीब या अमीर बुलाते हो, तभी उसको, ठीक है. ही डज नॉट जज हिमसेल्फ, राइट. देन आई हैव अनदर फ्रेंड whose name I cannot take because he's somewhat important in some other places, not on the internet. I have never met somebody more fun than him at all. Like मैंने उसके fun levels ऐसे क्रॉस होते हुए देखे ना कि मेरे को विश्वास नहीं होता था ये एक ही रात में इतना सब कुछ हो गया. और मेरे जैसा आदमी सिर्फ देख रहा है कि ये हो रहा है, ये कैसे फट रहा है, ये क्यों फट रहा है, ये इतना कैसे फट सकता है, इसको रोको कोई. कि मतलब उसके साथ हम 7 दिन भी पार्टी करते थे तो वो एफर्ट नहीं लगता था, क्योंकि आज एक नया एडवेंचर है और आज कुछ भी हो सकता है, हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं. लाइक ये कहीं पे भी शुरुआत हो सकती है सुबह की. एक दिन हम सुबह उठे, हम सैन फ्रांसिस्को में थे, कहता है हमें जोशुआ ट्री जाना चाहिए. जोशुआ ट्री 13 घंटे की ड्राइव है. हम उस रात जोशुआ ट्री थे. समझ रहा है. एक और मेरा फ्रेंड है, वो भी ऐसा है. मैं उसके घर खाना खाने गया एक बार न्यूयॉर्क में, कहता है हमें अटलांटिक सिटी जाना चाहिए. मैं बोला भाई मेरे पास कच्चे भी नहीं है. कह रहा कोई नहीं, रास्ते में उठा लेंगे. नहीं उठाए, हम जोशुआ, हम पहुंच गए अटलांटिक सिटी. समझ रहा है. क्या वहां जाके टाइम पास भाई. नहीं भाई तबाही. ठीक है, तो देख मेरे पास तो पैसे होते नहीं थे, मेरे पास $100-200 थे. अटलांटिक सिटी इज अ गैम्बलिंग सिटी ना. तो हम ब्लैक जैक टेबल पे बैठे, ये विदेशी आदमी है भाई, ये बैठा. और अच्छा, अटलांटिक सिटी में सारे डीलर्स इंडियन है, सारा क्राउड जो है ना न्यू जर्सी के गुजराती लोग हैं सब. ठीक है, तो हम बैठे, उसने देखा कि ये तो गुजराती अंकल हैं, मतलब इंडियन अंकल हैं, और मैं इंडियन हूँ. उसको मैंने 2-4 गाली, मैंने क्या, वो पहले से सीख के आ चुका था. उसने छूटते ही बीप कर देना इसको. भाई वो गुजराती अंकल कह रहे इसको संभालो, मैं इसको डील नहीं करूँ. वहां से रात शुरुआत हुई. सुबह पता है खत्म क्या हुआ. हम अटलांटिक सिटी, अटलांटिक ओशन में सारे कपड़े उतार के कंप्लीटली नंगे हम स्विमिंग कर रहे हैं रात से 3-4 बजे से अंधेरे में. अब रोशनी हो गई, और रोशनी हो गई तो लोग बीच पे आ गए, और अब हम बाहर नहीं निकल सकते वरना सेक्सुअल ऑफेंस का क्राइम लग जाएगा हमारे ऊपर. तो हम किसी तरीके से वेट कर रहे हैं, लोग निकले और हम कपड़े पहन के भागे. सो लाइक थिंग्स वुड एस्केलेट टू अ पॉइंट वेयर इट वुड नॉट मेक सेंस, राइट. And then I've had people who can throw in hot and cold signals so brilliantly that works like a charm as well in a sort of a rizzing environment, right? Each of these skills is applicable to different contexts. Like I think the non-judgmental skill is applicable to any context. The having fun skill is applicable to short-term hookups and that kind of पता ही नहीं चला कब हमने hookup कर लिया वाली बात, right? ऐसा भी होता है. हाँ, ऐसा ही होता है. Okay. See पता ही नहीं चला कब क्या हो गया. I'm giving away too many secrets. But the best kind of hookups happen, and you can confirm this with a woman, when it was smooth. Flow. It just automatically went there. Like we never had to make a choice that it's going there. There was no अब रुक के अब हम सोच रहे हैं जाना है कि नहीं, पूछ रहे हैं कि क्या. हाँ, right. That works in that case, and hot and cold signals work in like वो जो toxic कुत्ता बिल्ली लड़ाई वाले relationships होते हैं वो establish करने के लिए. So all these have different sort of appeals, these techniques. I prefer having the non-judgmental plus a little bit of fun
kind of a situation because I found hot and cold signals don't produce long term nothing. शॉर्ट टर्म ठीक है, पागल कर दो एक दूसरे को वाला ठीक रहता है, और वो अगर इंसिडेंटली हो जाए हॉट एंड कोल्ड तो बेस्ट रहता है. तुम अगर प्लान कर रहे हो, यू आर टू इन्वॉल्व्ड इन द गेम एंड दैट्स जस्ट फिर तो मजा ही खत्म हो गया सारा. फिर तो यू आर ट्रीटिंग देम लाइक शिट एंड इट्स नो लॉन्गर फन, यू डोंट रिस्पेक्ट देम. समझ रहा है? ऑल ऑफ दिस समझ रहा हूँ. लॉन्ग एक्सप्लेनेशन. अभी एग्जाम हो गया इसके बाद. अच्छा, ये बता, कल से सारे ट्राई कर रहे होंगे हॉट एंड कोल्ड. आज प्रखर भाई सारे ट्विटर पे टैग कर रहे हैं @day 1 of trying hot and cold. सारे बच्चे बिगाड़ दिए प्रखर ने. जेल. तेरे को पता है मेरे को सबसे ज़्यादा इरिटेशन तब होती है जब मैं सबके बारे में बात करता हूँ, ठीक है, और जैसे कॉलेजेस वगैरह में मेरे से पूछ लेते हैं लोग सबके बारे में, एंड व्हेन आई टेल देम व्हाट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर, टीचर्स और एडल्ट्स विल बी लाइक ये क्या बता दिया. हाँ, एंड नहीं ये क्यों बात हो रही है. एंड द रियल क्वेश्चन आई हैव टू देम इज, आपकी लाइफ में सेक्स कैसा चल रहा है? सही है, मजा आ रहा है? क्योंकि नहीं आ रहा ना, सच बताओ, नहीं आ रहा ना. you're in a sexless marriage, right? And why I'm being mean or harsh is because लोग इस बारे में बात करना नहीं चाहते. People don't want to talk about this and they want to keep this hidden, and then they face the own outcomes of this strategy. Bro, the amount of bullshit that we engage in because sex is inaccessible is tremendous. इंसानों ने पूरी सिविलाइजेशन खड़ी कर दी ताकि औरतें उन्हें पसंद करें. ये मंकी डांसिंग चल रही है सिर्फ इसलिए ताकि औरतें उन्हें पसंद करें. तो भाई ऑनेस्टली बैठ के बात कर लेते हैं ना कि कैसे चलते हैं फीमेल इमोशंस और मेल इमोशंस उस कॉन्टेक्स्ट में. बता देते हैं ना लोगों को, ताकि वो अब जो करें इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिजायर फॉर सेक्स, सो दैट दे कैन एक्चुअली इंडल्ज इन लाइफ फॉर द सेक ऑफ इट. ताकि वो एक्चुअली कोई काम तो धार्मिक लेवल पे करें, ट्रूथ लेवल पे करें. लड़के बाइक के साइलेंसर से लेके जॉब की डिस्क्रिप्शन और उसके पैकेज तक को इससे नापते कि कौन सी लड़की पसंद करेगी. क्या जीवन जी रहे हो, क्या कर रहे हो? और फिर ये नहीं बात करते. क्यों? यही तो बात करते हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं, फिर बाकी सारी बात करेंगे. Unless there is a psychosexual revolution that happens at the level of the individual in college and in high school, nothing is truthful. Because secretly सबके मन में क्या है? वो Instagram मॉडल मेरे को DM कर दे. Come on bro, get rid of that, move forward, come on and be truthful. कमेंट करते हैं लोग, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? हाँ, इसीलिए नहीं हो रही. और क्या नहीं हो रहा. आदमी इस ब्रो, मतलब तेरे को तो पता होगा, you know enough founders. आज की डेट में founders are very glorified, and with all due respect, they're fucking great people. But so many founders just want female attention. Yeah, true. They begin for that reason, right? Like, and so I know a friend, and एक founder है, and वो हमेशा उसकी मैसेज उसको रिप्लाई करता है स्टोरी पे, ऐसा विद द हार्ट वाला इमोजी एंड ऑल द टाइम. वो रिप्लाई करती है, कुछ बात करने की वजह से बात नहीं करता, ऐसे करके छोड़ देता है. Is this really funny? I'm just telling you. So why don't we just get rid of that? So much corruption on the spiritual and the material level exists because of this reason. Look at Harvey Weinstein. Look at the Me Too movement. Look at all of that. Why does that exist? Because men particularly are parched for sex and women are parched for real intimacy. So why does all this nonsense in the female sexual culture exist? मर्दों के उसमें है, no doubt, right? Because of the same reason. They don't know how to create relationships. Beautiful women will always get options, but relationships banenge nahi. Phir kya hoga? They'll play games, then they'll get lost in those games, they'll think the games are real, then they'll wake up be like all men are trash. And men do the same. They get lost in trying to attract a woman, it never happens, all women are trash. This is the dynamic we've created. We've taken one half of the human spirit and separated it from the other half, and then we want it to remain that way. स्कूलों में लड़के लड़कियों की लाइनें अलग होंगी. तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या कर रहे हो? इस उम्र में ट्रॉमेटाइज कर रहे हो क्या? उठो, जागो. एक अलग रो बनी हुई है. हाँ, क्या कर रहे हो? वो बात ही तो कर लेंगे यार. पता है क्या, मैं अभी एक कॉलेज में बात करने गया हुआ था, वहां पे हम इस सब के बारे में बात कर रहे थे, वहां से सब निकल के आता है. तो उन्होंने पूछा, भैया आपके यहाँ कैसे होता था कोलंबिया में? ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या होता था, मतलब लड़के लड़कियों का डायनामिक और ये सब. मिसडेमिनर्स वहाँ पे भी हुए, हिस्टोरिकली फेमस मिसडेमिनर्स हुए. अगर किसी को सर्च करना हो, एक वो था, क्या कहते हैं उसे, गद्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस गद्दे पे सोते हैं, मैट्रेस. हाँ, एक देयर इज अ मैट्रेस इंसिडेंट वेरी फेमसली आउट ऑफ कोलंबिया, इवन दो दैट वाज अ होल स्कैंडल इन इट्स ओन वे. बट फॉर 99.999% it's all good, bro. People behave in a very healthy, fairly respectful manner with each other around sex. Yeah, what is so bad about it? Why do we have to create such a taboo around the most basic instinct that humans have that created you and I? Why can't we just be open about it?
फॉर वंस. Why does a father never sit his son down and be like, बच्चे चल तेरे को बताता हूँ सेक्स कैसे करते हैं. हंसी लोगे ना, थोड़ा awkward हो जाएगा. चैनल क्यों चेंज कर देते हैं? क्या कर रहे हो यार? And so this is where it begins. मूवी चालू होती है, संडे को मूवी देख रहे होते हैं, पूरी फैमिली तो देखने लग जाती है. किसिंग सीन आ गया फिर. हाँ, और वो क्या हो गया यार, खुल के बात ही तो करनी है इस बारे में. ऐसी बहुत चीजें हैं. This is not just it. There's many things like this we never decide to discuss. Sex is the most striking, है ना? It's the most sensational. Oh, sex की बात कर दी, right? But think about the relationship between a father and a son, which is always complicated. Saas bahu relationships, which are always complicated. Why don't we talk about it? नहीं बनती. क्यों धक्का मार रहे हो? But चल ठीक है, क्या तू मेरे को taboo करने ले जा रहा है? Tell me about friendships. Ask me. What is a great friendship for you? Where I can sit and shit on somebody for as long as I want. And they don't mind. They understand that this comes from love. Right? Where I said this on a podcast and the clip got viral. I said, where I can leave money and the women of my family with them without a worry in my mind. Somebody who's willing to kill and die. अगर मैं fundamental biological level बात करूं, ये सत्य है अच्छी दोस्ती का, कि भाई मैं घर से उठा लूंगा, तू टेंशन मत ले. तेरे को मारा किसने? किया तूने कभी किसी के लिए? किसी को मारा है? किसी अपने दोस्त के लिए? नहीं. ब्रो, तेरी क्या दोस्ती हो जानी है? मैं तेरे को मजाक नहीं कर रहा. और तूने कभी अपने दोस्त को मारा है? किसी को दोस्त को मार के वापस जब दोस्ती हो जाती है ना, मार के अब निकल गई भड़ास, क्या दोस्ती होती है वो? मैं तो समझता हूँ वो रियल. अरे मेरे को याद है, मैंने मारा था 5th ग्रेड में. 5th ग्रेड में तो क्या है. पर मतलब जैसे थोड़ा बड़ा होने के बाद ना, कभी किसी से लड़ाई हो जाए, गर्मा गर्मी थप्पड़ उसने मार दिया, तूने मार दिया, एक दूसरे को फाड़ा, फिर कहते हैं यार चल तेरे मेरे में तो चलता है, एक ड्रिंक पीते हैं. Done for life, you're friends for life. But frankly, what creates friendships is shared experience. Be that shared past, future. I don't know if you came across that in my book. Yeah, I speak extensively in about the book. that. Right. So shared reality will create friendship. Either when you share a past. Suppose तू और मैं एक ही past से आते हैं, या हम एक ही present में हम दोनों YouTuber हैं, दोस्ती हो जाएगी, या हम एक ही future में कि हम दोनों millionaire founder बनना चाहते हैं, right? But what is the mark of a great friendship is the ability to hurt each other without it meaning anything. दोस्ती आजकल मतलब ही बहुत हो गई है. कब नहीं थी? हमेशा ऐसी रहेगी. आप बता दो, आपके जमाने में दोस्ती मतलब ही नहीं थी? थी ना? क्या अब नहीं. ये मेरे को ये जनरेशनल आर्ग्यूमेंट इतना बेकार लगता है. हर जनरेशन को लगता है हमारी प्रॉब्लम स्पेशल है, और ये सामने वाली जनरेशन तो बेकार है, इनको कुछ नहीं पता. दिस जनरेशन, हमारी जनरेशन के लोग ही लिख रहे होंगे ट्विटर पे, दिस जनरेशन. साले तू अलग मूली है, तू कहीं और पैदा हुआ था, तू इस जनरेशन का पार्ट नहीं. तेरे को क्यों लगता है तू स्पेशल है? तेरे को किसने हक दिया ये फील करने का कि तू मेरे से अलग है? नहीं है. तू मेरे से, और तू मेरे से भी ज्यादा मैं हूं. You are more me than I am me. You are more this generation than anybody else is this generation. So ऐसा नहीं है कि दोस्ती अब मतलबी हो गई. दोस्ती हमेशा मतलबी थी, और वो दोस्ती नहीं होती. You know, those are acquaintances. And in fact, as you grow up, the tragedy of time is such that all friendships look more and more like transactions. And therefore only, or rather the friends you make when you are young are purer friendships. Yeah. Right? Like that's why you just asked me that. Have I made friends when I was little? Yeah, well, look, I think in your case, because you were moving around quite a bit, you'll still make friends, and frankly, the fewer the friends, the better it is in some way. But जैसे यार अब जो मेरे दोस्त बनते हैं ना, वो for n number of reasons बनते हैं. जो मेरे दोस्त तब से हैं ना, जैसे तू अगर मेरे किसी ऐसे दोस्त से मिलेगा ना जो कंटेंट में ही है, ठीक है, विनम्र इज एन एग्जाम्पल. एक अमन अनिरुद्ध करके 2 लड़के हैं फरीदाबाद में. दे रन दिस कंपनी कॉल्ड एबिलेंट गेमिंग. शाउट आउट एबिलेंट गेमिंग एंड अमन अनिरुद्ध, ग्रेट गाइज, राइट? अपूर्व, who currently manages me. Apurv and I have been friends since we were 19, right? तू उनसे कभी मिलेगा और तू उन्हें सपोज एक फैन बॉय मोमेंट होता है, अरे प्रखर पता क्या बोलेंगे, ये साला, समझ रहा है? तो उनकी आंखों में प्रखर वो है ना, राइट, जहाँ पे इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि मैं प्रखर से कुछ ले सकता हूँ, इसलिए उसका दोस्त बनूं. हम दोस्त बन गए क्योंकि भाई यूं ही गिर गए हम दोस्ती में, बेकार बातें कर रहे थे. हाँ, अमन अनिरुद्ध मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बस में जाते थे. आज वो इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं कंटेंट में, ठीक है. हम क्या बातें करते थे, ओए रोटी बची है लंच वाली, ओए रोटी दे, ओए उस वाले में मार लगा, असाइनमेंट दे, कॉपी करना है. असाइनमेंट की तो फेल हो रहा है, चल छोड़, फेल होना है, बट लाइक ओए ब्रेक में कैंटीन में मिल. जब तुम ऐसी बातें करते हुए बड़े हुए हो, तो अब तू मेरे से क्या ही ले लेगा? तूने तो मेरे को नंगा देख लिया, मैंने तेरे को नंगा देख लिया है, ठीक है. तो फिर वहां वो नहीं रहता. लाइक यू हैव all my friends in America, if you ever meet them, and you know they sometimes do see in America people who like my content will go, Prakhar, this, that, can I get a picture? हंस रहे होंगे, ये बेवकूफ, ये गधा, समझ रहा है, इसने तो अपना घर साफ नहीं किया, ये इससे क्या बात. So that is what creates मतलबी and non-मतलबी friendships.
The younger you are, the more innocent you are, and the more innocent you are, the likelier you to have a better friendship. फिर तुम एज करने लगते हो, मतलब घुसने लगता है चीज़ों में. There's another thing that I'm realizing right now, because now my friends are graduating from college. Someone is getting a job, someone is starting a startup, कोई content बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, and now the reason for us to meet is reducing. And पहले I used to meet them almost every month. कोई ट्रिप होती थी, दिल्ली चला गया, मिल गए दोस्त, चले गए हम लोग बोका डिएड होना, तो that was happening a lot. And अब वो नहीं होता. And मेरा दोस्त ऐसे दिल्ली में, he joined his consulting company, and now he called me, he was like, भाई हम लोग मिले नहीं 4 महीने से यार. And I went to Malaysia, Bali for his birthday over there when he was there, and we were like saying कि हाँ यार नहीं मिल पाया अभी तो बहुत टाइम से. ऐसा ही होता रहता है. हाँ ऐसे ही हो रहा है काफी सारे दोस्तों के साथ. हाँ मतलब यार देख, मैं तो आई एम एट द कस्प ऑफ all my friends getting married. 5 years down the line, all my friends will have kids, right? फिर कहाँ टाइम है यार? तुम अपना काम करते हो, शाम को घर आते हो, शाम को 20 बच्चों को टाइम देना है, माँ बाप को टाइम देना है, क्या बचा टाइम हैंग आउट करने के लिए? वो तो गिवन है, स्पेशली अगर तुम स्ट्रगलर हो, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग योर वे अप इन द मटीरियल वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू बी मोर बिजी, राइट? इट्स अ गिवन. The only real tragedy is that time is passing and you can do nothing about it. तो ये तुम बिल्डिंग के ऊपर से खड़े होकर चिल्ला भी लोगे, लोगों को समझ नहीं आएगा. पर मैं जब ये बोलता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ उनके दिमाग में ये बात कहीं फंस जाए, और फिर जब वो वक्त आए तो वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये लैंग्वेज यूज कर पाए. द रियल ट्रेजेडी इज द टाइम इज पासिंग एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट. कन्वर्सली इफ यू सी, एक टाइम था जब मेरे पेरेंट्स वुड लव टू गो ट्रैवल एंड दे वुड टेक मी विद. देन इट स्टॉप्ड हैपनिंग बिकॉज आई acquired my own life. अब मैं, जैसे कहते हैं ना, at 20 you want to leave your house, at 30 you want to come back home. I'm near 30 and I'm coming back home. Now I'm back home and now I'm done with sort of having 10 years of wild Prakhar life. मेरा पेट भरा हुआ है उस सेंस में. Now I want to travel with them, but मेरा काम है, उनकी भी एज है. So you're also losing contact with your friends. Right around the time you turn 30, the interesting thing that begins to happen, that 20-year-olds, particularly people who are influenced by you, will not understand, because you sort of advocate for young success, is that your life only begins roughly when you touch 30. Before that, it's all just video games. Like even you, no matter what success you have, by the time you're 30, like I remember when I was 22, I was a complete buffoon. Not that I'm not now, but I was a complete idiot. So imagine where you're going to be when you're 30, good or bad, right? ये वो टाइम है जब तुम्हें अपनी लाइफ बनानी होती है, जिसके अपने रूल्स होते हैं. इससे पहले तो तुम रूल्स में फिक गए होते हो, चाहे वो स्कूल के रूल है, कॉलेज के रूल है, जॉब के रूल है. फिर तुम जॉब में सेटल हो गए, घर पैसा आ रहा है, माँ बाप ठीक हैं, खुश हैं, ठीक है, you're looking to get married or already married, having kids or already having kids. Now you need to invent a life of your own. So I was at a friend's place, beautiful apartment. He was showing me the apartment. We go to different rooms. He shows me, this is the mandir, this is that, this is my parents' room. Then he takes me to the most beautiful room in the apartment. He's like, this is my room. And it struck me. I was like, shouldn't it be your parents' room? But no, he's 30. This is his house. He bought it. And so now the rules are his. And he gets the best room in the apartment. And this begins to happen when you're 30. And this is where life truly, truly begins. The life you will be with for the next 20, 25, 30 years at least. So, all in all, what I'm trying to say is, हाँ, मिलना कम हो जाता है. मैं इस चीज़ को लेके पता है क्या करता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट डाल लेता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ. सो फॉर इंस्टेंस, मेरा एक दोस्त है ऑरी फ्लोरेंटीन, शाउट आउट, जीनियस, स्ट्रेट अप जीनियस. लाइक द ओनली सेकंड गाय आई मेट एट कोलंबिया जिससे बात करके मेरे को ऐसा लगता था सारे दिन अभी भी बात करा लो. क्या बंदा है, क्या सोचता है, कमाल आदमी. साइकाइट्री पढ़ के आ रहा है, रेजिडेंसी कर रहा है, पेंटर है, पियानो बजाता है, चेस खेलता है, और मतलब अभी वो मेरे को 2000 वर्ड का ऐसे भेजने वाला है रिलीजन और मिस्टिसिज्म पे. तो तू सोच ले, ठीक है, मेरे टाइप का आदमी, मजा आ जाता है, ठीक है. मैं औरी के साथ मेरी डील ही है. औरी, मेरे दिमाग में जो साइकोलॉजिकल कंसर्न्स होंगे, एज अ साइकाइट्रिस्ट आई टॉक टू यू, सो वी हैव अ रीजन टू टॉक. एंड वट एवर यू डू इंटेलेक्चुअली, which I have some understanding of in media, you send to me so I can review. Now there is a reason for that conversation to happen, because with Perry, as much as I love him, and as much as I'll always be screaming his name on podcasts or videos or streams that I do, because he truly shaped me into becoming who I am today. I really think he could be Vivek Ramaswamy times 2. सोच, मैं मजाक नहीं कर रहा. He's that caliber, right? We don't talk anymore.
It's very difficult to get a hold of him or him to get a hold of me because there's no common ground to talk. Jugnu, who I lived with for many years, complete opposite of Perry, crazy idiot. Very little reason to talk. But Alex, who was not my roommate, lived somewhere else, we do some writing work together. We're writing my next book together. Mm-hmm. So as long as you have a project with somebody, there is reason to interact. You change the games over which you interact. When you're a kid, it's cricket or football. Then you grow up a little older, it's probably girls or it's probably partying or it's one of those things. Then you grow a little older. Some people have a poker phase because, you start making money and you want to do something with money. So you start playing poker. That's quite common in tier 1 cities. We had a poker phase. Then it's business. Then it's projects. And that's what I tell my friends. Let's do something together so there's a reason to meet. Otherwise छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे. फिर बस याद करोगे क्या दिन थे यार, क्या दिन थे. फोटोज देख के भेजते रहते हैं यार, हम इतने जवान थे. मैं सच में सोचता हूँ कितना weird होगा when we'll be like 60, 70, we'll look back, we'll have crystal clear photos and videos of how we were at 20. एक गाना है ओल्ड फ्रेंड्स करके साइमन एंड गारफंकल का. तो मेरा बचपन का जो सबसे पुराना दोस्त है ना, आई बीन फ्रेंड्स विद हिम सिंस आई वाज 1. तो हम 27 साल से दोस्त हैं. वो मेरे बिल्कुल घर के सामने रहता है. वी आर द सेम एज. आवर बर्थडेज आर 1 month apart. वी ऑलवेज डिड एवरीथिंग टुगेदर. ठीक है. एंड ही इज़ अ सुपर हाई अचीवर. ही वन नेशनल फ्रेश फेस, गिटारिस्ट, म्यूजिशियन है, बहुत गुड लुकिंग, right? Runs a company that's worth more crores than any of us can count. Like all this good shit, right? And then I have my small little, क्या बोलते हैं उसे, खिलौनों की दुकान, right? So him and I, मैं तो point भी भूल गया मैं क्या कह रहा था, but चल मैं point ही भूल गया, छोड़. खिलौनों की दुकान पे क्या बात करी थी मैंने शुरू? What was I beginning with? दोस्तों की बात हो रही थी. हाँ, दोस्तों की कुछ बात हो रही थी, छोड़. बट ऐसा होता है कई बार. हाँ, बात करते करते भूल ही गए कहाँ से स्टार्ट किया था. सारी जिंदगी मेरी ये है भाई, तू क्या बात कर रहा है. This is half my life. But yeah man, like him and I, we share the most honest friendship I can have with anyone. Like literally he'll be like, Prakhar, कल परसों ना उसने एक पोस्ट डाला हुआ था, ठीक है. एक स्नीकर की फोटो थी जो दुनिया में 4 ही ऐसे स्नीकर हैं apparently. उसने वो खरीदने की कोशिश करी, नहीं मिला. कहता, I'm so sad I did not get this sneaker. I was like, bro, if buying things could make you happy, you'd be the happiest person in the world. He's like, bro, you've got to stop being this honest with me. मेरी fantasy में मेरे को जीने दे. You do that to people? I was like, bro, you are 30, you're 28, 29 technically, and you drive a Porsche. You think buying a sneaker is going to make you happy? Stop kidding yourself. Of course I do that to people. Like people who are close to me, yeah, sure. I'm very annoying to them. Reality check. नहीं, प्रवचन बांटता रहता हूँ, साले वो मेरे को गाली देते रहते हैं. मैंने गूगल पे सर्च किया GenZ डेटिंग लिंगो, एंड जब मैंने वो सर्च किया तो मेरा दिमाग फट गया मेरा. मेरे को याद भी नहीं यार. I'll read it for you. Right? वो क्या बोलते हैं? हाँ, they were terms: love bombing, benching, cuffing, ghosting, woke fishing, breadcrumbing, situationships, okay, pocketing, let's pink guess, flag, beige flags. Let's guess what this means from the top, okay? Because I'm not sure what they mean, but I have an idea. So what's the first one you said? Love bombing. The first one I said is love bombing. Love bombing. Love bombing probably means, and tell me if I'm right, throwing excessive love fairly unopportunistically at the other person. Yeah. Right? अच्छा, फिर the second one is benching. नहीं, the point is ये सब हैं, उनके definition मिल जाएंगे लोगों को Google पे. The point is, do you know the answer to all of them? I could guess. क्या है बताओ? Is pretending to be woke to fish for women or men, huh? Yeah. It's pretty simple. And very common. This is all of Columbia. ये सब all of the entire university is doing that. तो the thing is that people in the comments, जब ये सब post आते हैं, they're like, अरे my generation was simpler, there were no such things, it was very simple. Why do you think all of these things are there? Because there was no language, but effectively you were doing the same shit. तू उससे कल मिला है छत पे पतंग टूटने के बहाने, आज तू उसको चिट्ठी में लिख के भेज रहा है, तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा. That's love bombing. ऐसा नहीं है कि कोई न्यू स्ट्रैटेजी इन्वेंट कर दी है जेन जी ने, उसको लैंग्वेज दे दी है, श्योर, बिकॉज they've begun to see patterns that have existed for generations. So stop pretending like they're different. It's just too expressive now. No, they just have language. There's not even expressive. ठीक है, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ईजी. तू टेक्स्ट कर सकता है, तेरे को चिट्ठी लिख के पापा के या फोन करके. जैसे आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम स्कूल में व्हेन
नोकियाज वर अ थिंग, राइट, लाइक तब तक आईफोन भी आए थे. तो मेरे पास मेरी उस स्कूल टाइम गर्लफ्रेंड का घर का नंबर होता था, तो मैं उस पर फोन करता था. कई बार उसके पापा उठा लेते तो कार्ड देना पड़ता था, राइट. कुछ लोगों की ये पूरी कॉलेज लाइफ थी जो मेरे से बड़े थे, समझ रहा है. सो ऑल ऑफ दिस हैज एग्जिस्टेड फॉर एवर, राइट. तू क्या बात कर रहा है, ये जो फॉल्स सिग्नलिंग होती है, फॉल्स सिग्नलिंग मतलब फॉल्स सिग्नलिंग, कि देखो मैं तो इन्वायरमेंट के प्रति कितना जागरूक हूँ ताकि वो तुम्हें पसंद करे, ये पहले नहीं होता था. लाइक ऑल ऑफ दिस हैज फॉर एवर एग्जिस्टेड. All of the dance that leads up to a relationship or intimacy is performance. That is why I said start with the rawest version of yourself. Because don't perform. उसके बाद सिर्फ बेटर ही हो सकता है ना. उसके बाद तो लाइक तूने लोएस्ट एक्सपेक्टेशन से शुरू किया है ना. बट नहीं, ऐसा नहीं है. यू हैव टू परफॉर्म ब्रो. हम तू और मैं परफॉर्म कर रहे हैं, तू कैमरा हटा दे तो भी परफॉर्म कर रहे होंगे. तू अपने माँ बाप के सामने भी परफॉर्म ही करता है. ईशान होने की एक्टिंग. ईशान नहीं है तू. ईशान तू तब है जब कमरे के दरवाजे बंद है, अंधेरा हो रखा है और तू रात को बैठा हुआ है. शाहरुख खान से पूछा था एक क्वेश्चन किसी ने, हाँ, कि आपको कैसा फील होता है, लाइक लोग आपके पास आते हैं, इतना एवरीवन नोज यू इन इंडिया, एंड ही इज लाइक I love it. He said I love it. Right? नहीं, अच्छा. he obviously loves it. He said that he loves it, and then he says that I am a myth to the name called Shah Rukh Khan. Yeah. or something like that. He said. He's hostage to it to some degree as Yeah. well, which he might enjoy, right? But yeah, like all this stuff has always existed, bro. पहले क्या बोलते थे, सीन है, अब उसको सिचुएशनशिप बोल देते हैं. सीन चल रहा है, सीन है, टाका भिड़ा है, और लाइक ब्रो हर जनरेशन की अपनी लैंग्वेज होती है. टेक्सटिंग फेज कहते थे, अब उसको सिचुएशनशिप बोल देते हैं, राइट. लाइक हम बात कर रहे हैं, मैंने अभी तक आई लव यू नहीं बोला, लाइक दैट काइंड ऑफ दैट नॉनसेंस इज फॉरएवर एग्जिस्टेड. दिस इज स्कोप. नॉर्मल है सब. This is scope. Yeah. This is scope for everybody who's like, oh, this generation is this. You were the same. Wake up. You were literally the same in that time. How long are you? There is some changes that happen. And those changes are not individual. Those are macro cultural factors. Exactly. Like the prevalence of internet. And what that means we are in a constant performance environment. तू सोच ना, एक टाइम था, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं भीड़ में खड़ा होकर बोल देता हूँ भारत के लोग ऐसे ऐसे हैं. फिर माइक बंद हो जाता है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं बोलूँ भारत के लोग तो साले कुछ नहीं, गवार है. मैं कर सकता हूँ, क्यों किसी को नहीं पता. अब हम कांस्टेंट कैमरा एज में है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एज में. मेरे को परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है कैमरा, वो माइक के बाद भी. सो द ओनली डिफरेंस नाउ इज दैट द परफॉर्मेंस इज मोर परमानेंट, right? There is some macro cultural factors that have transformed, macro economic factors. India is richer, so people go on more dates. पहले वो बाइक पे ही घुमा लाओ, वो बहुत बड़ी बात होती थी. हाँ, राइट. लाइक पहले मिलने के लिए छत पे आया करते थे, अब मिलने के लिए स्टारबक्स जाते हैं, राइट. देयर सम डिफरेंसेस लाइक दैट, बट individual psychology is coded over millions of years of evolution. These strategies, by all these strategies, all of them, you can literally find biological literature describing it. बायोलॉजी में, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, इन सेक्सुअल सिग्नलिंग के प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स होते हैं. अब मेरे को सारे क्या थोड़े भी याद नहीं होंगे. 2-3-4 साल पहले मेरे को सब पता था, बिकॉज आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड. ऑल ऑफ दिस इज नोन फिनोमिना ब्रो. बाइंग एन एक्सपेंसिव कार is called a Zahavian signal, which means I can drop $5 million and still not care. And it comes from, it's almost like मैं एक हाथ पीछे बांध के बोलूँ आजा ईशान, which means I'm so strong I don't need to use two hands. It's a handicap principle. Peacocking is a very common word. I wear clothes that attract attention so that I don't have to go talk to people. All of this shit exists, bro. Yeah, it's not new. And I think people should stop pretending like it's new to make themselves feel better than this generation. You've just gotten old. When people say that, na, ye generation, you are admitting to the fact that you're old. Why would you do that? वैसे बुड्ढे हो रहे हो तो मन से तो जवान रह लो मेरे भाई. So दिल लॉजिकल एक सीरीज है. हाँ. उसमें बंदा होता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस कर होता है 4 साल से. और 4 साल के बाद अपनी बंदी से मिलने आता है, क्योंकि उनकी कॉमन फ्रेंड की शादी हो रही होती है. वो वहाँ पे जाकर के मिलता है उससे और बोलता है कि आई वांट टू नाउ मैरी यू. इज अ प्रॉमिस रिंग दैट आई एम गिविंग टू यू. एंड शी इज रोका, जिसे रोका कहते हैं बाय द वे. हाँ, प्रॉमिस रिंग कोई बोले जेनजी प्रॉमिस रिंग बोलता है, रोका कहते हैं तुम्हारे माँ बाप उसे. हाँ. तो वो कर रहा होता है, उसे सरप्राइज करता है. एंड शी इज लाइक कि यार मैंने तो अभी दुनिया देखी नहीं है, तुम तो बढ़िया चल के आ गए SF में, अभी तुम गूगल में काम कर रहे हो, एंड मुझे दुनिया देखनी है. आई जस्ट डोंट वांट टू बी योर वाइफ. आई वांट टू एक्सप्लोर पीपल, आई वांट टू मीट पीपल. ना बोलता तो मैं डेट करना किसी और को. तो बोलती है शायद. तो तू 4 साल से क्या कर रही थी?
लाइक फॉर रियल. हाँ, एनीवे. हाँ. तो एंड ये रील वायरल है इंस्टाग्राम पे, अच्छा. राइट? हाँ. एंड तो लोग वहाँ पे दे आर लाइक ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, एंड देन दे एंड अप हैविंग लाइक ओपन रिलेशनशिप इन दैट सीरीज, एंड वापस आ जाती है फिर वो बंदी. बट द पॉइंट इज दिस इज एक्चुअली हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल एट माई एज. कि when it comes to marriage they want to explore options. टू अ मोर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, देन दे आर लाइक कि नहीं, मेरे को तो ऑप्शंस. हाँ ठीक है, तुम भाई 22 साल के हो यार. फ्रीडम. हाँ भाई, Yeah. मैं 22 साल का था, मेरे को कोई टिका देता एक के साथ. मैं तो लाइक माई पेरेंट्स समटाइम्स वॉच दिस शिट. हाँ फॉर रियल. मैं 22 साल का जवान गुड लुकिंग 6 फुटिया लौंडा हूँ. क्यों रुकूं भाई मैं? ये तो उम्र है एक्सप्लोर करने की. मैं तो भागूंगा यहाँ वहाँ. तो ये अगेन दिस इज नॉट लाइक दिस वाज नॉट हैपनिंग 6 years ago. Right? Like this was happening forever. Yeah, people could have been more scared back in the day, but really like this is non-new, bro. This is non-new. पता है, वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि बात नहीं करते ना माँ बाप, वरना तुम्हें माँ बाप बता देंगे कि हमारे टाइम में क्या होता था. With a few alterations, this has always existed, one way or the other. So now, for instance, you can say कि भाई दुनिया देखने की चाह बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया देखने के तरीके इतने हो गए हैं. मेरी रील्स पे ही पूरी दुनिया दिख रही है, तो मेरे को देखनी है अब. पहले लोगों को पता नहीं था लंदन कैसा दिखता है, तो जाना ही नहीं था. बट देवडी का पूरा कॉन्सेप्ट वाज रफली नहीं, एक्चुअली नहीं, देवडी का नहीं, बट लाइक यू विल फाइंड n number of examples of this. This is non. So then what do you do then? उससे पूछ, तू पागल है? No one wants to commit. It's like नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ब्रो. लाइक लेट्स बी रियल, ठीक है? You're a guy, you find a catch, you would want to hold her down. You're a girl, you find a catch, you want to hold her down. Now look at, but they don't want to be held, they want to be free. Go, then be free. Whenever you're ready, come back. And we'll see where I'm at. Like really, the only person complaining is a person with a lack of options, and a person who's fooled themselves into thinking 4 साल से तुम long distance हो, तुम मिले नहीं हो, बेवकूफ हो. I'm in a long distance right now. मैं हर 2-3 महीने में मिल पाता हूँ, right? Last she was in India, अब मैं 10 दिन बाद मैं यूरोप में हूँ, फिर 3-4 महीने बाद मैं अमेरिका जाऊंगा, देन शील बी इन इंडिया, राइट? पर एटलीस्ट ये है ना, हम 3-4 महीने में मिल पा रहे हैं, और वो लॉन्ग डिस्टेंस का एक सेंसिबिलिटी है. तुम 4 साल से लॉन्ग डिस्टेंस में बेवकूफ हो गए. तुम्हें क्या पता वो इंसान कौन है 4 साल में? तू बेवकूफ है, तू उसके 4 साल से बिना मिले. और तू बेवकूफ है, तू 4 साल से कर क्या रही है? व्हाट इज दिस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी यू नीड, जहां तुम टेक्स्ट करके खुश हो? तू जा एक्सप्लोर कर. अब क्या जाग रही है? बड़ी मूर्ख है. बच गया तू तो लड़का है, मैं तो बोलूंगा बच गया साले. वो हाँ बोल देती डर से, बाद में कहती मेरे को एक्सप्लोर करना है. फिर तू क्या करता? थ्रीसम. लाइक मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल बाल बाल बचा है तू. समझ रहा है? सो सी ब्रो, देयर इज अ सर्टेन एज टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन. आई विल से दिस हाउएवर, द कमोडिटाइजेशन ऑफ सेक्स इज रियल. Sex has become commodity. And how has that become commodity? Through your dating apps, right? Where earlier sex was a longer fight anywhere in the world, right? India mein much longer, rest of the world also longer. Now it's a swipe. So the other person is not their personality. It is the sex appeal in their pictures and the funny one-liners in their bio. We started off by putting our best lives on Instagram. Now we think the lives we live on Instagram is real. We have convinced ourselves, and so the other person is convinced. Larger point I'm trying to drive is sex is commoditized, and people think there is something to sexual liberation which will be lost if they get too old before experiencing it. So I say, do it now. What are you waiting for? Sexual liberation. Yeah, go fucking have as much sex as you want. Go, run, do it. There is costs to this, by the way, both for men and women. How does it affect you? Well, men find it hard to pair bond after that, and so do women. Yeah. It becomes much harder to be monogamous after. And I know this from a lot of second-hand experience. Like a lot of friends who've had trouble being like, अब मैं कैसे commit करूँ? इतने options हैं मेरे पास. Body count issues. Yeah. So like there is a problem to that. And honestly speaking, very soon in your sexual liberation you realize the hollowness of it. Like of course it's fun and you should explore it if you want to, no problem, but you don't need 100 people to realize मैं क्या कर रहा हूँ. Within the first 20 you're like, bro क्या खालीपन है ये, इससे बढ़िया तो किसी को ढूंढ लेता हूँ. Right. तो वो बहुत टाइम नहीं लगता समझने में. 20 भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ भाई, लोगों को 3 में ही समझ आ जाता है frankly. Interesting. हाँ अरे मैं तो कह रहा हूँ लोग नीचे बोलते हैं girls these days. वो भाई वो लड़कियां बोलती boys these days, all men are trash. इंस्टाग्राम कमेंट्स की दुनिया रियल नहीं है. वो इंस्टाग्राम की दुनिया से भी घटिया है. सब वर्च्यू सिग्नल कर रहे हैं. इंस्टाग्राम कमेंट्स इज द बर्थ प्लेस ऑफ वर्च्यू सिग्नलिंग ऑन द इंटरनेट नाउ. पहले ट्विटर होता रहा वो कि देखो मैं कितना वोक हूं. अब इंस्टाग्राम कमेंट्स होता है देखो मैं कितना बेस्ड हूं.
दैट्स लिटरली इट. तू कोई भी रील खोल ले, उसके कमेंट्स उस रील से ज्यादा फनी होते हैं. राइट. क्योंकि सारे वर्चू सिग्नल कर रहे होते, देखो हम तो इससे अलग हैं, ये तो ऐसा है. हाँ. और वो फनी होते हैं, नो डाउट, देयर हिलेरियस. बट इंस्टाग्राम कमेंट, द नीड फॉर यू टू बी लाइक, ये रैंडम वीडियो जो मेरे सामने है, इसके कमेंट सेक्शन में जाके एक फनी बात लिख देता हूँ ताकि 3000 लाइक मेरे को भी आए. ओ माय गॉड, यू नीड अ जॉब. लाइक फॉर रियल. ये लोग करते हैं, सोचते हैं बैठ करके कि क्यों करते हैं कमेंट? मेरे को बता दे क्या मोटिव. तूने कभी किसी इंस्टाग्राम रील के आगे कमेंट किया कुछ फनी ताकि तेरे को लाइक्स मिले? सोचा नहीं, बस मैंने कमेंट कर दिया, मेरे को फील हुआ. जो मतलब दोस्ती यारी में कर देता है आदमी किसी दोस्त की, या फिर राइट लाइक कुछ बहुत अच्छा दिखता है तो वाओ बोल देता है एट बेस्ट. बट जो आदमी दूसरे को गिराने निकलता है, मैं मना नहीं कर रहा, वो फनी होते हैं, आई अग्री, राइट? लाइक ऑल ह्यूमर इज बेसिकली सम काइंड ऑफ बीइंग मीन टू समवन एल्स, राइट? लाइक एटलीस्ट द फनीएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर टू मी. बट द मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग दैट, क्या करता है तू? रील्स अपने फ्रेंड ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता है और उसके नीचे खुद अपना कैप्शन डाल देता है. सोच वो चीज पब्लिक में लिखना और किसी को डिराइड और इंसल्ट करना, दैट रिक्वायर्स अ मोटिवेशन. एंड यू हैव टू एक्नॉलेज वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, within yourself as far as others. It is coming from a place of wanting people to see you. So वही जो तू कह रहा था ना, मैं चाहता हूँ मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और 1000 लोग मेरे को देखें, वो सेम सेंटिमेंट है. yeah. किसी के पास वो इंस्टाग्राम कमेंट्स में है, किसी के पास वो सीईओज के सामने खड़े होके बकर करने में है. वो सेंटिमेंट कॉमन है. वाओ, बाप रे. I have not had a long conversation like this with anyone on podcast. Hey man, tell me, are you going to come on a date with me after this or what? अब जा रहे हैं बस. Have I successfully raised a 22-year-old You boy? You have. It's 7:50 right now. 9 Damn, o'clock. Bro, let's advocate for bisexuality in this podcast. My time, your place. मैं ऐसे करूंगा, देख तू घुसेगा ना ऐसे ऐसे और पीछे बैकग्राउंड आवाज आएगी, तेरे को पता नहीं होगा तू पिटने वाला है कि सेक्स करने वाला है. भाई ये जाएगा लाइव मेरे चैनल पे. तू बता तेरी ऑडियंस की क्या उम्र है? उम्र तो भैया 18 से 25. भाई अर्पित बाला ने ना सबको ब्रेन वॉश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डाल चलता है, मतलब हाँ, डाल अर्पित बाला की वजह से अब दुनिया अलग है. अर्पित बाला. There was a pre-Arpit Bala world and a post-Arpit Bala world, and we live in a post-Arpit Bala world. ऐसा क्या किया अर्पित बाला ने? भाई Arpit made, see, Arpit is the same genre of people as myself and Vinamra and Carrie. Or He's just out there. No, yeah, he's his own person, but जो हमारे दिमाग के intrusive thoughts है ना, उसने वो publicly डाल दिए हैं. Arpit is very unique, once in a generation talent in my view, as far as comedy is concerned, right? But he's Faridabad, he's DPS Faridabad. He's that same group. फरीदाबाद में क्या है ऐसा? भाई हमारे खाने में जहर है. फरीदाबाद में एफ्लुएंस है, एक्सेस नहीं है. लोगों के पास टेस्ट है, बट टेस्ट खर्चने को जगह ही नहीं है. उसके लिए दिल्ली जाना पड़ता है. तो आदमी फिर इंटरनेट पे हिलाने लगता है कि इंटरनेट पे कुछ कर लो, समझ रहा है? और फिर वो हो जाता है. प्लस ब्रो कैरेक्टर देख तू यार, मैं मजाक कर, रजत दलाल पता है कौन है? तेरी ऑडियंस को पता होगा. क्या कैरेक्टर आदमी है वो. रोज एक कोई लफड़ा कर देता है इंटरनेट पे. वो भी फरीदाबाद का, हमारे जिम का ही है. मतलब फरीदाबाद में सब क्रिएटर हैं, सब पर्सनैलिटी हैं, सब कोप कर रहे हैं, और वो कोप पर्सनैलिटी है सब. There's everyone from Ankur Warikoo to a Carrie Minati to Neeraj Arora, and Ankur Warikoo, Neeraj Arora are sober people. Like, you know, not to include them in the same group as myself and Arpit. The wide spectrum. Yeah, it's a huge spectrum, and everybody's interesting in Faridabad, bro. Yeah. Vivek Bindra. Hey, off camera, but I actually met him recently. At my brother's wedding, surprisingly. I was about to meet him at an event. And then, you know... No, and then... it did not end up happening due to some logistical reason. Yeah. I'll meet him soon. Sahi podcast. But he's also Faridabad. There's so many people in Faridabad, bro. It's an ongoing river of creators somehow. हर 2 साल में, like you would have thought विनम्र कोई टॉप नहीं करेगा, then अर्पित आ गया. I'm guaranteeing you 2 साल में अर्पित कोई टॉप कर देगा फरीदाबाद से. Like it is this generation that keeps giving somehow. Who would have thought, right? फाइट क्लब देखी आपने? हाँ ऑफ कोर्स ब्रो. फाइट क्लब में कोट है एक कि we are the middle children of history. Yeah. No purpose or place. There are no great wars we for have us no to fight. Great war, no great depression. Yep. Our great war is a spiritual war. Yep. Our great depression is our lives. Yep. How do you fight that war? And how do you... So this is Chuck Palahniuk's most popular work. Yeah. If you know Chuck Palahniuk even a little more than Fight Club, you will realize he is de facto one of the most original writers of our time. Listen to Chuck Palahniuk on Joe Rogan. I've done a stream actually where I was
watching clips with people of Chuck Palahniuk, bro, the stuff he tells you, it's just insane. Matlab, Fight Club is not even the beginning of it. And people love Fight Club for its reality. So the quote, and we will redo the quote. He says, we are the middle children of history, right? There are no great wars and no great depression. Our great war is a spiritual war and our great depression is our lives, right? You have to understand this in historical context. So if you look at what is happening until from the beginning of 1700s, tu kitna bhi piche chala ja, theek hai? Like you can start at whichever point. Is there a preferred point to begin? Up to you. Okay. So around the 1500s, let's just go 500 years ago, Renaissance is happening. Europe is rediscovering its culture. Europe is like, oh my God, right? But more individually, nobody's seen the world. The great voyages of the 16th and the 17th and the 18th century are about to happen, where the Dutch, the French, the Portuguese, the English, somewhat the Germans, all get on ships, the Spanish, all get on ships and go out and explore the world. The new world, which is North America and South America, is found this time. It is found. It's called Newfoundland. I think one of the places in Greenland is called that. The point is, this is the moment in history where first they rediscover their own spirit. After the plague, the Black Plague or something that happens in Europe that wipes out 1/3 of the population, उनकी सारी हिस्ट्री मर जाती है, फिर वो रीडिस्कवर करते हैं, आर्ट वार्ट करते हैं. 17वीं 18वीं सदी तक वो आके एक लेवल ऑफ सेटलमेंट करने के लिए बाहर निकलते हैं. ट्रेड शुरू होती है. मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट्स इंटरकनेक्टेडनेस बिगिंस देयर. देन all of the 19th century is spent on acquiring and trading territories. So South America gets acquired by the Spanish and the Portuguese, somewhat the Dutch. North America is a Dutch territory and an English territory, right? India is a British colony. Parts of China, Britain is trading with. Indonesia is something. Africa is Francophile and Anglophile. All of this is happening. This results in the First World War in 1914 to 1919, I think. That's the First World War. So, up until... isko bhi aage le jate hain. After the First World War, there's temporary peace. And then there's a Second World War. After the Second World War, there is a de facto war, which is the Cold War. That ends up until the 1991. 1991 is also incidentally when India opens up. Liberalization. And it's also the moment when South Africa gets free, 1994 or something. So the effects of colonization, which began after the Renaissance, which began after the Black Plague, which began after the Christian Crusades, and so on, ends up in the early 2000s. And it ends up with this event called the Y2K, which is the birth of the computer and the fusing of everything and all information around the world. Chuck Palahniuk is writing around this time, where he says that all great movements in history have come to somewhat a close. There is another person who's talking about some version of this. Actually, there are two people who are... कर लो. मेरे को मेरी आवाज आएगी फिर मैं awkward हो जाऊंगा. अच्छा लगता है सुनना खुद की आवाज? नहीं, हाँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे बात करते हुए तो मुझे weird लगता है, पता नहीं क्यों. Hold that question. So there are two people who are talking about the end of history as a phenomena. Sorry, this is a little long-winded, but you need to completely understand the intellectual context behind this. Friedrich Hegel is a German idealist philosopher that predates Karl Marx and communism, who gives the concept of the movement of history till the point history is completed. And he says history is completed, or Marx says history is completed when all people have achieved social and economic liberation. But Hegel says history is complete when all people have achieved spiritual or Geist. Geist is the German word for spirit, liberation. Friedrich नहीं, एक Hayek करके बंदा है शायद, Friedrich Hayek है, पता नहीं, I'm confusing first names. Hayek is also a thinker who's speaking of this in economic terms. So end of history is around, and a lot of people have spoken about it. And we see this with the fall of the Soviet Russia, that the world becomes a unipolar world, and America is in dominance, and all wars are settled. And suddenly we arrive after a great movement of 1,000 years into this moment where suddenly there is no macro cultural or macroeconomic forces at play, except capitalism and consumerism. Now everything will make sense. So we are the middle children of history. We exist between two wars. We don't have any great wars to fight. There are no great depressions.
ऐसा नहीं हो रहा कि ब्लैक प्लेग चल रहा है या इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है. वी हैव none of that. Our great war is a spiritual war. Because through this 1,000-year motion of end of history, we've arrived at a place where our spirit is lost. We don't know who we are. We don't understand who we are. Our great depression is a... क्या बोलता है? What is the last line? Our great depression is a... Is our lives. Is our life. So our great depression is the fact that we are alive. And all of this, and if you look at the broader theme of Fight Club, it's about consumerism. वो क्या नाम है उसका? Edward. Who's the main guy? Edward something उसका, I forget his name. The main character जिसका alter ego Brad Pitt है. वो पिक्चर शुरू कहाँ से होती है? हग रहा होता है IKEA और कैटलॉग देख रहा होता है. Consuming. And the alter ego of this guy breaks him out and says, ये consumptionist mindset से वापस biological roots पे आप figure out who you truly are. And who you truly are is the all-seeing, all-knowing shit of the world. ऐसे करके कुछ एक लाइन है ऐसी मूवी में. You are the all-dancing, all-singing crap of this world. I think ये लाइन है, चेक कर लियो. ठीक है? And so the entire movie is a coming back to your roots kind of a phenomena for men. And all of it begins with violence as far as Chuck Palahniuk is concerned. So this is what it means. Ki we are without macro-cultural, macroeconomic forces that drive the direction of our life. So we are left to our own devices. And so our life has become depressive. The only war we are left with is the one within. That is what he's saying. आया समझ में? हाँ, बहुत लंबा है, बहुत लंबे. मजेदार है. हाँ. But what is next? How do we survive? How do we win this war? You are getting into spiritual sensibilities again. You want to get into that? Time नहीं अपने पास. नहीं, time का कोई issue नहीं है. But effectively you stop fighting. You stop wrestling. Right. You wake up. I gave you the answer a little while ago. You realize you're about to die. See, the reason why this might resonate with the male part of you but not with the Indian part of you is because the Indian cultural unconscious, which is the Indian background of behavior, has nothing to do with this. The Indian mind has been awake to spiritual doors forever. Right. And throughout this 1,000-year period, all India is saying is that you're about to die. You're about to die. Wake up. So this is what I meant also when I said Americans don't get spirituality. They consume spirituality. Right? To win the spiritual war, you realize there's nothing to fight. There's only waking up to do. And the way you wake up is by realizing the eternal truth of impermanence. And once you realize that, not intellectually, inside your body, once you see actually, हाँ, सब impermanent है और इसीलिए खूबसूरत है, फिर बागों में तितलियां सुंदर लगने लगती हैं, गानों में धुन समझ आने लगती है, नाचने में थिरकने में दिक्कत नहीं होती, फिर दिक्कत नहीं होती, फिर कोई वॉर नहीं रह जाती, फिर कभी वॉर थी ही नहीं, फिर वॉर वो झूठ था जो मैंने खुद को बोल दिया था, फिर वॉर एक मेटाफर था उसको समझाने के लिए जिसको वॉर के मेटाफर समझ आते हैं, फिर ये सारी बातें हैं, फिर शब्द सिर्फ कॉन्डम है, शब्द रियल नहीं है, शब्द प्लास्टिक है, फिर सिर्फ अनुभूति, अनुभव सिर्फ एक्सपीरियंस के लेवल पे, फिर नॉलेज नहीं, प्रज्ञा, विजडम रह जाती है, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, फिर आदमी जागना शुरू हो जाता है. ये वो बात है जो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं वॉर के मेटाफर से, भगवत गीत में. ये वो बात है. फिर वहां पे आपको ब्रैड पिट और चक पालनुए की बात नहीं समझ आती, फिर आपको कृष्ण का सत्य समझ आता है, फिर आपको जीसस का सत्य समझ आता है, फिर वहां बदलाव आ जाता है, फिर वहां क्रांति हो जाती है, फिर वहां पे ये हो जाता है. तो अब स्पिरिचुअल लेवल पे घुसने के लिए फिलोसॉफिकली ब्रो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें आइडिया भी पास ऑन करने के लिए. बट जिसको इस बात में हल्के से भी रीड नथिंग, मैं बताता हूँ क्या करना है तुम्हें. अगर तुम्हें ये बात सुन के लगा हाँ प्रखर शायद कुछ कह रहा है मेरे समझ नहीं आ रही, तो रीड करने से तो कुछ नहीं होना. मैंने बोला ना, नॉलेज एंड्स एंड विजडम बिगिंस. अनुभूति, अनुभव, प्रज्ञा, ठीक है. और वो प्रज्ञा, वो विजडम आती कहां से? समाधि. समाधि मतलब सेंटर्डनेस, समाधि मतलब अवेयरनेस. बहुत डीप हो जाएगा ये, बट इफेक्टिवली तुम्हें क्या करने की जरूरत है मैं तुम्हें इन शॉर्ट बता देता हूं. जाओ 10 दिन की विपश्यना बुक करो dhamma.org पे. मैं इंडिया का नंबर 1 विपश्यना इन्फ्लुएंसर हूं, जस्ट सो दैट पीपल नो. मैं चाहता हूं सब आदमी विपश्यना जाए, बिकॉज इट इज द ड्राइस्ट, कोल्डेस्ट, मोस्ट डायरेक्ट मेथड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. क्या होता है विपासना में जिनको नहीं पता? 10 दिन आप साइलेंस में विदाउट स्टिमुलस, सो नो फोन, नो टीवी, नो रीडिंग, राइटिंग, नो टॉकिंग, नॉट इवन मेकिंग आई कॉन्टैक्ट. 10 दिन आप सन्नाटे में बैठते हो.
और आप सीखते हो आध्यात्म, अंतर्मुखी होना, टू लुक इनसाइड, टू वेक अप, टू अंडरस्टैंड हु यू ट्रूली आर. यू बिगिन टू लर्न इन दैट साइलेंस. धर्म की आवाज सुनाई तब देती है जब सन्नाटा आता है, जब अकेलेपन में ही धर्म दिखता है, भीड़ में सिर्फ झूठ दिखते हैं. मॉब बिहेवियर, सिर्फ मॉब बिहेवियर, भेड़ चाल. उसने ये किया इसलिए कर लेता हूं, उसको सक्सेस चाहिए इसलिए कर लेता हूं. उसकी आंखों से मेरे को, मैं ईशान की आंखों में देख के बोलूं प्रखर क्या बंदा है, क्योंकि ईशान सोचता है प्रखर क्या बंदा है, और इसमें मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं. जब ईशान ही कोई बंदा नहीं है, मैं क्या गरीबों की आंखों में अमीरियां ढूंढ रहा हूं भाई. मैं क्या बेवकूफ मूर्खों की नजरों में खुद को ज्ञानी प्राप्त करना चाहता हूं. मैं क्या फायदा है उसका. ये आत्मज्ञान तब शुरू होता है जब आप सन्नाटे से रूबरू होते हो, जब आप you realize this when you begin the process, the journey begins. See, ऐसा नहीं है Vipassana is the only door, like I said earlier, right? Prayer, there's many ways, right? Vipassana is the coldest, driest, it's like a boot camp, it's like an army boot camp for losing weight. There is no way that you will not see some version of truth. There is no way you will not lose some weight. दरवाजा कोई दया की तरह पैर से तोड़ के अंदर घुसने का अगर कोई तरीका है ना अध्यात्म में, तो वो विपश्यना है, सबसे डायरेक्ट, क्योंकि उसमें कोई बात नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. योग भी काम करता है ऐसे, तो डाओइज्म भी काम करता है, ठीक है. लाओ त्जू की बातें डाओइज्म हो गया, गुरजीएफ की बातें काम करेंगी, बहुत मास्टर्स, जीसस की बातें काम करेंगी, हर आदमी की बात काम कर. there's been many masters if you think about it. there's been many avatars. राम की बात काम करेगी, कृष्ण की बात काम, पर तुम सुनते कहाँ हो. तुम कृष्ण की बात को लेते हो और अपने रंग में ढाल देते हो, अपनी करप्शन जस्टिफाई कर देते हो कृष्ण की बातों से. कब से इंडिया में बोल रहे हैं राम राज्य राम राज्य, हर पॉलिटिकल कैंपेन का अंडरलाइन टैगलाइन होता है राम राज्य. आया है, इंदिरा गांधी भी कह रही थी, राजीव गांधी भी कह रहे थे, संजय गांधी भी कह रहे थे. कब से कह रहे हैं राम राज्य आता है? नहीं, हम we take what these masters have said and corrupt it for our own pleasure and for our own devices. And so the most unobstructed way to arrive at spiritual, let's say the source, the Gangotri of spiritual truth, is Buddha's no nonsense Vipassana. उसके बाद तुम्हें कृष्ण की बात भी समझ आने लगेंगी, दुर्गा की बात भी समझ आने लगेंगी. उसके बाद तुम्हें फिर समझने में दिक्कत नहीं होगी. फिर तुम्हें जीसस की बात भी समझ में आने लगेंगी उतनी, बिकॉज जीसस इज नॉट सेइंग समथिंग रेडिकली डिफरेंट, यू नो. देन इट ऑल बिगिंस टू मेक सेंस. बुद्धा हैड द मोस्ट नो नॉनसेंस वे, बिकॉज ही वाज लाइक, अब मैं तुम्हें बैठा के समझाऊं या तुम्हें दिखा दूं. कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला ना, मैं तेरे को बैठा के समझाऊं, पहले तो तू देख विराट अवतार, पहले तो तू देख और फिर सुन. फिर भगवत गीता दिया. अष्टावक्र की बात सुन लो, समझ आ जाएगी. अष्टावक्र नो नॉनसेंस है, बिल्कुल नो नॉनसेंस है, बट वो अष्टावक्र भी बात से समझाते हैं जनक को. एक स्टोरी है, अष्टावक्र गीत करके भी चलता है. तुम नीम करोली बाबा की बात सुन लो, तुम महर्षि रमन्ना की बात सुन लो, तुम योगानंद परमहंस की बात सुन लो. ये सब परमहंस हैं, ये सब सत्य बोल रहे हैं, बट तुम्हें नहीं समझ आएगा अभी, क्योंकि तुम क्या, मैं भी वेरी ऑफ्टन, यू टू लॉस्ट इन योर ओन ट्रिप, यू टू डीप इन योर ओन फॉरेस्ट. एक स्टोरी है ब्रह्मा की, भगवान ब्रह्मा की. कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई और सृष्टि को देख के मोहित हो गए. खुद ही गॉट सेड्यूस्ड बाय हिज ओन क्रिएशन, एंड देन यू नो फ्रॉम देयर, और भी आगे कहानी है. बट उस बात का मतलब क्या है कि सृष्टि का, जिस बंदे ने सृष्टि बनाई, जिस भगवान की क्रिएशन थी ये, वो ही कन्विंस हो गए ये क्रिएशन रियल है. ऐसे ही हम जिंदगी जीते हैं, हम अपनी दुनिया बनाते हैं, मेरे को ग्रोथ चाहिए, मेरे को सक्सेस चाहिए, मेरे को प्यार चाहिए, और हम कन्विंस हो जाते हैं कि ये ग्रोथ रियल है, ये सक्सेस रियल है, ये प्यार रियल है. सिर्फ रियल एक चीज है जो मैं बता चुका हूं इस पॉडकास्ट में, जो लोगों को याद है, जो तेरे को पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, मृत्यु. उसको नहीं देखना चाहते. उसके बीच में ग्रोथ आ जाए, उसके बीच में सक्सेस आ जाए, उसके बीच में प्रतिष्ठा आ जाए, पद आ जाए. समझ रहा है ना, सारी हिंदी बात समझ में आ रही है ना, लैंड हो रही है ना. हाँ, उसके बीच में ये सारे गुणगान आ जाए, ये सारे मंत्र जंतर आ जाए, बस ये ना ऐसा. तो फिर व्हाट मैटर्स इन लाइफ फॉर यू? मस्ती, नशा, खुमार. समझता है ये बात? खुमार क्या होता है? नशा मतलब एक, द मेटाफर आई प्रेफर टू यूज हियर इज ऑफ, क्या नाम है उनके, शिव का एक अवतार होता है ना, जो शिव के वो कौन से अवतार होते हैं जो डांस करते हैं, पता है? नटराज. ठीक है. सो लुक एट डांसिंग इज अ मेटाफर. Dancing is probably the only art form where the dance and the dancer are one.
आर्ट में तू यहाँ पेंट कर रहा है, ठीक है, तू म्यूजिक में गा रहा है, गाना यहाँ है, मैं यहाँ हूं, डांस में तू और डांस एक ही है, वो आंसर है. जब तुम ऐसे हो कि हो भी नहीं और हो भी, when you are such that you are the dance as well as the dancer, that is the essence. और वो आता है बचपन की मस्ती से. तेरे को अगर पता हो क्रिकेट खेलने में पता ही नहीं लगा शाम हो गई, बस सिद्ध हो गए भाई. उस शाम तुम सिद्ध हो गए, उस शाम तुम जगे हुए थे. फिर धीमे धीमे चिंताएं आ गई, फिर धीमे धीमे अड़चने आ गई, फिर तुम सो गए, और फिर तुम भूल गए उठते भी कैसे हैं. ये है. तो द आंसर इज मस्ती. और मस्ती मतलब ये नहीं कि 35 साल के हो गए हैं, दारू में पिए जा रहे हैं उल्टी करने के लिए. क्यों पी रहा है आदमी? 35 साल का आदमी इतनी दारू क्यों पी रहा है? क्यों ढूंढ रहा है 35 साल का आदमी इतना सेक्स? क्यों? तेरे 20 साल के बच्चे ऑडियंस में होंगे. एस्केप. It's not an escape. It's an attempt to find yourself. It's not an escape. It's literally the attempt to find yourself. क्योंकि एक टाइम पे जब मैंने दारू पी थी Does ना, that work? I'm coming to it. जब एक टाइम पे मैंने दारू पी थी ना, तब मैंने खुद को ढूंढ लिया था. तब वो मोमेंट आ गया था. Orgasms के बारे में सोच. Think about orgasms. Orgasm is a brief moment where the orgasm and the orgasmer are not separate. You are in flow with that feeling. You are in the Tao, as Lao Tzu would say. That's all we are looking for. Does that work? No. But neither does meditation. This is advanced, but all methods are in fact traps. Right. That is why all religions became more performance than they were substance. वहीं से तो दुर्गति शुरू हुई religions की. वहीं से तो धर्म religion बन गया, सच नहीं रहा. जहां वो परफॉर्मेंस बन गए, जहां द मेथड बिकेम द प्रिजन. If you truly look at the depths of spirituality, you don't necessarily need meditation. Meditation is a very clean way. Vipasna is probably the cleanest meditation to get there. But कितने लोग होते हैं जो सोचते हैं मेरे को योग समझ आती है, मैं योगा करता हूं इसलिए मैं सुपीरियर हूं. तो क्या फायदा हुआ योग करने का? तुम सोते ही रह गए. योग खत्म करके भी, विपश्यना करके भी मैं विपश्यना करता हूं, मैं साफ हूं, तो तुम फिर खो गए. Right? And so what I'm arriving at is alcohol works less than meditation, but meditation doesn't work either. None of these things work. They're all methods. They're all ways of recognizing truth क्या है. They're not the answer. बहुत डीप हो गई ये बात. मेरे को पता ये नहीं समझ आएगी. But जिस दिन जागोगे उस दिन समझ आएगी. जिस दिन एक बार भी में समझ में आई थी बात. बस अगले पिछले महीने. बेस्ट टाइम टू शूट अ पॉडकास्ट. और सुन ले, अभी फ्लाइट में समझ आई मेरे को. अच्छा. बिकॉज मैं फ्लाइट में, मेरा एक दोस्त है, मेरे को मैसेज करता है, कुछ कह रहा है, भाई मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ. तो मैंने उसे आई गेव हिम एडवाइस. कहता है भाई तू तो क्या फ्लो कर रहा है आजकल, तेरे तो प्रवचन बड़े डीप हैं. मैंने कहा नहीं भाई, मैं भी 40 मिनट पहले ही जागा हूँ. 2 दिन से अपने जंगल में खोया हुआ था मैं भी, अपनी चिंताओं में. ओ माई गॉड ये कैसे होगा, ओ मेरे को ये चाहिए, ओ काश मेरे पास ये होता, इसके पास ये क्यों है. फिर अचानक जाग खुली, सवेरा हो गया. फिर मैंने कहा वाह यार सवेरा हो गया. फिर मैं जब आ रहा था अभी, मैं सोच रहा था ईशान क्या पूछेगा, मेरे पास आंसर नहीं हुआ तो, अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो. और फिर अचानक मैं सो गया. फिर मैंने तेरे से बात करनी शुरू करी. फिर मैं एकदम से जाग गया. मैंने एहसास किया वो चिंता का क्या फायदा, बैठे तो हम सामने. तो कब समझे, मेरे को लगता है एक इंकलिंग थी बहुत टाइम से समझने की. धीमे धीमे समझ आ रहा है, धीमे धीमे जाग और खुल रही है. और ये जाग ऐसी है, एक बार खुल जाती है ना भाई, फिर इसका टेस्ट आ जाता है. फिर तुम इससे बहुत टाइम दूर नहीं रह पाते. और this is a completely different plane of consciousness, let's just say. It's a very different way of being altogether. And so I'm exploring the nuances of this. My last Vipasna experience, which actually ended only a month from today, was some of the most enlightening things I've ever been through. And that actually produced this version of me that is today. Insane. Yeah, man. Tell me about your relationship with your father. It's great. He's my best friend. I'm so happy he's my father, man. God damn it. He is probably the strongest person I know. And I don't mean this because he's my father, because I see him as a man and I'm like, how in the world are you like this? Papa, if you're ever listening to this, thank you. Really, you've done it well. And I've always fought with my father. 22-23 साल की उम्र तक मैं सिर्फ पापा से लड़ा हूँ. And I often say, when people ask me कि ब्रो तू इतना छोटा है, तेरे में इतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे है? क्योंकि मैं अपने बाप से नहीं डरा, तो मैं तेरे बाप से क्यों डरूंगा? मैं किसी से नहीं डरता. मेरे को ऐसा नहीं है, डर आता है, बट मैंने वो डर फेस कर लिया इतनी जल्दी लाइफ में. मेरे पापा बहुत स्ट्रांग आदमी है. अभी मैंने बोला बहुत स्ट्रांग आदमी, अब मैं बोल रहा हूँ बहुत स्ट्रांग आदमी है.
तो वो जो स्ट्रेंथ है, अब मैं डिस्टेंस से अप्रिशिएट कर पाता हूँ, नज़दीकी से वो बजती थी मेरे कान पे. मेरे को घर के बाहर जाना अलाउड नहीं था शाम होने के बाद, बहुत उम्र तक भी. ठीक है. बट अब जब साइकिल घूम चुकी है, उम्र हो चुकी है, ब्रो, मेरे को, मैं कल परसों मम्मी से कुछ कह रहा था, कुछ टेंशन थी. मैंने बोला मम्मी, और मेरे घर वालों को लगता होगा ड्रामेटिक बात है, पर कंटेंट में चलती हैं बातें. मैंने बोला मम्मी, मेरी ज़िंदगी ना सफल होए, अगर मेरे को अगले 20-30 साल आपके पैर दबाने का भी मौका है ना, और मैं आपके पास हूँ, मेरी ज़िंदगी सफल है. Because beautiful parents, fucking fighters, bro. Both of them. I have great relationship with my family. And I have more than one father. I have a father, his best friend, who's his business partner. We live together. वो मेरे ताऊजी हैं, मेरे पिता ही हैं. मेरे सीनियर पिता हैं. वो और सुलझे हुए पिता हैं मेरे. ठीक है, मेरे पापा तो मेरे जैसे हैं. वो थोड़े और समझदार हैं. और मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे ताऊजी के बेटे, वो मेरे को बेटा ही बुलाते हैं. उनको मैं, I treat him like a father figure. So I have many fathers, and all three of them are very interesting and very unique in their own ways. And none of them ever really bother with listening to anything I say. But it's okay. I'm happy being their son. So my relationship with my father is great, and it's well earned from both sides, because he had trouble adjusting to the son he had created. You know, when we would fight, I'd tell him, क्या है, आप नहीं बनाया ना ऐसा, तो फिर क्या है, आपकी पैदाइश हूँ, आपका बेटा हूँ, खून भी आपका हूँ, बातें भी आपकी हैं. फिर उनको रियलाइज होने लगा, हाँ सही कह रहा है. तो But like, what would you adopt when you get into हम that दोनों phase? शेर है ना. वो चिल्ला सकते हैं तो मैं चिल्ला सकता हूँ, वो तर्क दे सकते हैं, लॉयर हैं, वो रीजन कर सकते हैं, वो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, तो मैं उनका बाप हूँ इस मामले में. सार्ट्रा वुड से, जॉन पॉल सार्ट्रा, फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड फिलोसोफर, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. इट इज लिटरली ट्रू इन माई केस, एंड माई फादर इज प्राउड ऑफ इट. बट एज फार एज रीजनिंग, as far as arguments, as far as putting up a hard fight is concerned, I'm 2 times him. I'm undefeated when it comes to him. लड़ लो, आ जाओ, लड़ाओ, कितना लड़ना है. और प्लस फिर मेरे पास ये इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी और इनसेन आर्टिकुलेशन एबिलिटी. ही डजंट स्टैंड अ चांस इन एन आर्गुमेंट. ही हैज जीरो चांस. ही नोज दैट. So you I would decimate him. argue with your dad. Yeah, And but I've that's a learned good how to. thing. Yeah, I've learned how to do it better. Initially, it was punching and like sparks and jhagda. अब it is comical. अब it is, जैसे I'll give you an example, ठीक है, personal, but जैसे अब my girlfriend's not Indian, right, and things are kind of picking up speed within families for marriage and whatever. पापा बोलेंगे तू मेरे Oh, you're साथ, getting married. hopefully, you know, we'll find out. But it looks like, you know, we are both very serious. We have spoken to our families also, so it's beginning to happen. So पापा मेरे साथ बोलेंगे मेरे साथ रुक जाओ, मतलब मेरे साथ रहियो. मैं बोलूँगा पापा नहीं, पास रहते हैं, साथ नहीं रहते. क्यों, लड़ाई करनी है रोज, लड़ाई करनी है? नहीं, हम नहीं लड़ेंगे. पापा कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कौन सा बाप और कौन सा बेटा नहीं लड़ता. फिर बाप छुप छुप के अपनी बीवी से कहता है मेरा बेटा कितना हाथ से निकल गया है. बेटा छुप छुप के अपनी बीवी से कहता है मेरा बाप तो बुड्ढा खूसट है. क्या फायदा है. फिर वो हंसने लगते हैं जैसे तू हंस रहा है. Right. फिर वो कहते हैं बात तो ठीक कह रहा है. फिर बात ठंडी पड़ जाती है. बट इनिशियली इट वॉज लाइक पापा आप रहने दो, आपको कुछ नहीं पता. एंड नाउ इट इज much more understanding of where he's coming from. So it's much more comical, and it's more about releasing the tension than creating more tension. So yeah, I argue with my father, and I'm glad I do, and I do it very well, and I think he appreciates it. And yeah, man, I think I have a great relationship. I'm very blessed to have a father like him. He taught me he made me who I am today in so many ways, with and without trying. What is the one question you would ask Prakhar Gupta if you were in my shoes? तू चुप कब होता है. अभी लाइक साले तू चुप कब होता है, इतना कैसे तेरे पास बोलने को है. I don't know, bro. What would I ask myself? तू बचपन से ऐसा ही था. Like I have a, मेरे पास एक privileged access है अपने को लेके, तो मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता. तो मैं अपने आप से बकचोद सवाल ही पूछता, मैं सीरियस सवाल नहीं पूछता, है ना. बट हाँ, मैं ऐसे कुछ पूछता, साले तू ऐसा ही है, पागल है तू, यही करता रहता है पूरा दिन. हमेशा से ऐसा ही था. हाँ, मैं हमेशा से ऐसा ही था. लिटरली एटलीस्ट जब से मेरे को पता है 17-18 साल की उम्र से मैं ऐसा ही हूँ. मेरे को मेरे किसी दोस्त ने बोला था यार तू प्रवचन बहुत देता है, तभी तो प्रखर के प्रवचन नाम रखा मैंने अपने चैनल का. दिस इज द बैकग्राउंड. वो कोट सुना है आपने, looks don't matter only if you're pretty, money doesn't matter only if you're rich. Sure. And what do you think of it? What do I think? Just because you realize a truth on the other side of it does not make it any degree untrue on this side. You definitely realize
that looks don't matter once you're pretty. You definitely realize money doesn't matter once you're rich. And it is the most obvious next step. Because you're like, अबे मैं पैसा भी आ गया, सुंदर भी हो गया, लेकिन खुश तो मैं अभी भी नहीं हूँ. या मिल तो मेरे को अभी भी नहीं रहा जो मेरे को चाहिए. जो आदमी बिना कमाए और बिना सुंदर हुए ये बात जेन्युइनली समझ जाए, वो जागना शुरू कर चुका है. क्योंकि वो बहुत मुश्किल है. एक जवान आदमी को अध्यात्म दिखाना बड़ा मुश्किल है. टू शो अ यंग पर्सन स्पिरिचुअलिटी इज कंप्लीटली एन इनसेन जॉब. बिकॉज उसके मन में अभी इतनी इच्छाएं हैं भाई, उसको भी ये करना है, वो करना है. एक गरीब आदमी को ये बोलना पैसा मत कमा, इसमें कुछ नहीं रखा, उसको ना उसको समझ आएगा, ना तुम्हें बोलना चाहिए कमा लेने दो. मेरी बात समझ रहा है? पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये सच नहीं है. सच तो ये फिर भी है. सच तो ये फिर भी है. क्योंकि तू सोच, बचपन में क्या सोच रहे, बड़े हो जाएंगे फिर आजादी मिलेगी. अब आजादी घंटा लेके बैठे हैं हाथ में, क्या करें पूरे दिन में. 3 घंटे से बैठ के है ना. इसका मतलब ये थोड़ी है बच्चे के लिए ये सच नहीं है. तब भी सच है, बट बच्चे को कौन समझाए. You understand? Yeah. There is a reason why Buddha set out to become enlightened, or Jesus was some degree a king. There is a reason why Ram was a king, Krishna was a king. There is a reason, because ये वो सब मिलने के बाद ही ढंग से समझ आना शुरू होता है कि इसमें कुछ नहीं रखा. बुद्ध की लिटरल बैक स्टोरी, ओरिजिन स्टोरी ये है कि सब राजा वाजा हैं, बाप घर से बाहर नहीं जाने देता, एक दिन जाने देता है तो बुद्ध देखते हैं कि कोई मर रहा है, कोई बीमार है, कोई पीड़ित है. बुद्ध कहते हैं ये क्या है, तो कोई कहता है आपके साथ भी ये होगा. एकदम उनके दिमाग में घंटा बजता, कहते हैं ये क्या, ये पैसे, ये महल, ये दीवारें भी मेरे को नहीं बचा सकती. फिर वो कहते हैं अब इससे भी ज्यादा सनातन क्या है, क्योंकि ये सब तो टेम्पररी है, ये सब तो आया गया. जब ये मेरे को बचा ही नहीं सकते इस चीज से, तब बुद्ध निकलते हैं परम सत्य की खोज में. तो हाँ, देयर इज अ रीजन कि ये सारे राजा हैं यार. समझ रहा है ना. सो इट इज ट्रू, but it's very hard to convince somebody who does not have it that it's not true. Yeah. So I always suggest go make your money, go become pretty. Only realize that doesn't matter. हाँ, 5-10 साल बाद समझ आ जाएगा. मेरी तो किस्मत है that I had sufficient money and I was born with decent genes to realize this. Right? वो कोट सुना है आपने कि hard times create strong men create weak times create weak नहीं, strong men create bad times create weak men. Yeah. Weak men create hard times. Yeah. We are in that stage of No. weak men becoming. You are more in that stage personally. Think about it. कुछ tragic होता है, ठीक है. Let's say तेरे को business loss हो जाता है, अचानक तू बिल्कुल focus होके अपने business पे लग जाएगा. Now hard times have created strong Ishan. Strong Ishan makes money again. Money comes, अहंकार आ जाता है. अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, इससे भी निकल आया. अब ईशान अय्याशी में खो जाता है, उसका मन यहाँ वहाँ भागने लगता है, मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. फिर ईशान कमजोर पड़ जाता है. फिर ये तो this is describing the way life works. And yeah, sure, society also. This is true socially also. You can see it in the fall of Rome. You can see it in the current fall of America. Yeah. The way, society is inflicted वहाँ पे. But yeah, it's more a personal anecdote than anything else. So what to do about it? How to not become weak? Jago. That has been I think the main theme of this podcast that we've been talking about. It'll again take you into, मतलब फिर we'll have to go into a 20-minute spiritual understanding. Right? But iska material understanding is don't get weak. Understand that this is coming for you. Don't get weak. Stay focused. Be a poor man in a rich man's body. मतलब? भाई जो लोग खुद फर्स्ट जनरेशन पैसे बनाते हैं ना, जैसे मेरे पापा, वो मानसिक तरीके से कभी भी अमीर नहीं होते. वो मानसिक रूप से गरीब ही होते हैं. अच्छी बात है वो भाई. हाँ, तो तुम अय्याश नहीं होते ना. मतलब एक कहने की बात है, ऐसा जरूरी नहीं है हो जाओ, बट be a poor man in a rich man's body and you will always be more conservative. Hard circumstances, pain is always more true than pleasure. Epic. I think that was it. I'm so glad we did this. Yes, we did it. This was the most sexy conversation I've had in a while. अच्छा. क्या बात कर रहे हो? मना कर दिया. This was good. I meant it as a joke. And I was hoping this would be more funny than it was. But I guess जो लोग अभी तक देख रहे हैं वीडियो, उनको क्या बोलोगे? जागो. और क्या बोलूंगा भाई. मैं बोलूंगा, सुनो मैं बताता हूँ. Art of conversation. Don't shut up को ऑर्डर करो Amazon पर. Get my जैसे book. मैंने किया था. Get my shit, dude. Get my shit. I'm always telling you the truth. Believe in consumerism. Fall into capitalism. Spend your money.
over and over to satisfy that part of your ego that cannot be satisfied, right? Fall into the loop of never feeling complete and fill it up with people like myself and the shit we say to make you happy. Fall into the loops of entertainment that come from hollow words that don't mean shit. And at the end of the day, subscribe to Prakhar ke Pravachan. Buy Don't Shut Up. Get into Art of Conversation if you want to learn more. And frankly, if none of this, if like jokes aside, if there is something serious you want to do and you're over 18, check out Vipasna. Epic. Check out Vipasna. Thank you for watching. Peace. We'll see you in the next one. Yep. Good.